Hi guys, so welcome to OAS Hub, the most awaited and most accurate prelims GS paper 1 analysis and which is comparable to OPSC answer key सहित आपण कंपेयर करि परिबे जेतर लेटर रे आसीबो. सो मोस्ट एक्यूरेट आंसर की OAS Hub तरफरु आपण माने देखि परिबे एवं आमे एठी दीपक सर अछंती जे पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन ता रिलेटेड स्कीम्स रिलेटेड देखिबे. श्रीनिवास सार अछंती इकोनॉमिक्स रिलेटेड आपनकर जे करंट अफेयर्स रिलेटेड से पार्ट भी आपण देखि परिबे. सो आमे डिटेल्ड एनालिसिस करिवु एवं तार रीजन सह आपन को एक्सप्लेनेशन सह आपन दबु. सो यही आंसर आपन देखिबे ये आंसर माने निर्भुल पाखापाखि जोटा आम आसुनी से लिखि दे रंग ऑप्शन अच्छी कि कौन अच्छी पूरा निर्भुल भाव में ये आंसर कंपेयर करि परिबे एवं यही आंसर जदि आपण फाइनल आपण जहा करिसेंती से अनुसार डिसाइड करिवे देन आपण डेफिनेटली गोटे सियोर हे जिवे आज ही सियोर हे जिवे ये आंसर की देखि कि यू आर गोइंग इनटू द मेंस और नॉट. एंड अनदर थिंग इज दैट आपनकर कट ऑफ माध्य प्रेडिक्शन आमे लास्ट एनालिसिस परे लास्ट माने रे आपन को आपन प्रकाश करिवु कि कट ऑफ केते जाई पारे केते लास्ट टाइम भी आमे प्रेडिक्ट करथिलु 70 to 80 एंड इट इज एक्जेक्टली देन एंड देयर इटसेल्फ. सो आपन एई वर्ष भी अपेक्षा करंतु बहुत पिलांकर फीडबैक आसिलानी तो सेही अनुसार आमे आपन को इन्फॉर्मेशन दबु कि रिगार्डिंग आपनकर कोन कोन कट ऑफ केते जाई पारे कोन जाई पारे. सो स्टार्ट करिवा वन बाय वन एवं एवरीथिंग डिटेल्ड रे आपन पाइबे. सो वन बाय वन जिते जो जो सब्जेक्ट आसीबो हम सर माने आसीबे हमें डिस्कशन करिबा. सो प्रथम रू क्वेश्चंस ए सेट हला क्वेश्चन सेट हला जहा पाकर सी सेट अछि जोंटा कि आपण सेही थ्रू देखि परिबे. स्टार्टिंग सी सेट रू हमें करूचे एटा सर सॉरी एटा बी सेट हमें करूचे. आपण सी सेट जदि थिबो आपण पाखरे 18 नंबर क्वेश्चन रू स्टार्ट हबो तो सेही अनुसार आपण देखि दियंतु चेक कर दियंतु. we are going into that B set आमे आपन को एक्सप्लेनेशन सो दबु. सो B set रे आपन देखि परिबे एबेटू एवं सही अनुसार एक नंबर क्वेश्चंस पॉलिटी क्वेश्चंस अछि. दीपक सर आपन मान को सहित रहिबे. Okay, so first question is Tarkunde report is related to which of the following? It is basically electoral reform. 1. Next explanation. Yes, so this is related to electoral reform. The Tarkunde committee. The Tarkunde committee was set up by the Citizen for Democracy under Jayaprakash Narayan. It was headed by Justice V.M. Tarkunde, focused on electoral reform in India, and this committees recommended that formation of voters council to ensure free and fair election, greater independence to the election commission, and prohibition of misuse of official machinery during election. Okay, so you are not only getting the answer but also explanation. So question 1, next. Tarkunde report based on electoral reform. Next question, third. Yes, so diarchical system of government was introduced. Listen, आमे तो diarchical system कहूछु diarchy at center and diarchy at province दीटा जाको अलगा अलगा टाइम रे डिक्लेयर हेतिला. diarchy at province फर्स्ट हेतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. सर एटा भी कहि दबा कैंपा बेसिकली कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन है कहि दियो. हां, कैंपा compensatory afforestation and eco restoration. A direct question. तार explanation compensatory afforestation रो management planning authority established under compensatory afforestation fund act. Objective is to collect from
user agency, compensatory afforestation, forest regeneration, wildlife protection, eco restoration. এটা ডাইরেক্ট কোশ্চেন। আচ্ছা এইটা ডাইরেক্টলি সি হব গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আক্ট। আচ্ছা এটি গোটে কনফ্यूजन হই পারে কি ডাইরেক্টলি এট প্রভিন্স ফার্স্ট হইতিলা আর ডাইরেক্টলি এট সেন্টার হইতিলা, তো পিলা মানে ভাবিবে কি কো ডাইরেক্টলি হোছি, যেহেতু সে কিছু পচারি নেই ডাইরেক্টলি এট প্রভিন্স অর ডাইরেক্টলি এট সেন্টার, সো আমি নবা ফার্স্ট ডাইরেক্টলি কোডি হইতিলা, जोंटा इंट्रोड्यूस हेतला हां इंट्रोड्यूस केबे हईतिला, तो से हिसाब रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हबो। देखो तो के मोंटफोर्ड रिफॉर्म या मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म ये पढ़ा है कि अपन डायरेक्ट से देखि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बेसिकली क्वेश्चंस टिके डिफिकल्ट अछि, क्वेश्चंस ता डिफिकल्ट अछि, तो सही अनुसार सुक्रोज सी इज द करेक्ट आंसर। जे मारी थिबे सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर glycosidic bond is formed between that की aromatic carbons of both glucose and fructose। ये क्वेश्चंस ता अच्छी टिके डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सो आपण माने बाबूजी मेजॉरिटी पिला कर नथिबे जे साइंस बैकग्राउंड रू ये करथिबे। सो रिड्यूसिंग शुगर लाइक कोन ग्लूकोज, माल्टोज एंड फ्रुक्टोज दीज आर रिड्यूसिंग शुगर, सो दीज आर फ्री anomeric carbon that के अपन form dehydrated, so ये system गला। then next question हला world cultural realms are not correct। ये भी realms अच्छी, बेसिकली ज्योग्राफी ऑप्शनल जे पिला टिके कमांड थिबो ये क्वेश्चंस ता करि परिबो, ज्योग्राफी ऑप्शनल जार कमांड थिबो। सो ऑक्सीडेंटल रियल्म कंपेयर करी कहिछि इंडियन रियल्म, इस्लामिक रियल्म, सिनो जापानीज रियल्म एंड सब सहारन अफ्रीकन। सो करेक्ट आंसर विल बी 3 only, that is this one। questions पचारिछि कोन ना not correct, so this one Islamic realm restricted solely, जोंटे कि restricted solely ले कहि देला। एठी गोटे क्लू अछि Arabian Peninsula and excluding North Africa and Southeast Asia, so इटा wrong हे गेला। बाकी so statement 1 correct अछि, Occidental realm includes Western Europe, North of America, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब पाई परिबे। कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रीको रोमन हेरिटेज, क्रिश्चियनिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सेकंड ऑप्शन भी इंडियन रियल्म जानिचो, इंडियन एंड इट सेव्ड बाय द हिंदुस्तान एंड बुद्धिज्म एंड रिलेटेड टू कल्चरल ट्रेडिशन। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, दैट इस्लामिक नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू सोली। देखो एई सब जिंस मते इवन एग्जाम पूर्व गोटे कहितली, सेतले हम कहितली कि एई सब जिंस कीवर्ड गोटे यूज हेइथिबो, सोली, ऑल, ओनली, ये सब वेरी वेरी गोटे की दिए, गोटे इंडिकेशन दिए कि ये चांसेस अच्छी भूल ही पारे। देन स्टेटमेंट 4 and 5 आर करेक्ट, सो से अनुसार आप देखिए सीएम किसान एंड क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। ओके, सीएम किसान, पीएम किसान बेसिकली रिसेंटली गवर्नमेंट या ऊपर न्यूज रे भी थिला, तो सही अनुसार आप एटा ठीक करि परिबे। सो करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट माने बाहर कर दिले नॉट करेक्ट, हां बेसिकली आपन आंसर हबो ए हबो, बेसिकली वन ओनली, दैट इज लाइवलीहुड सपोर्ट दउनी ना, लाइवलीहुड पाई दउनी, से एग्रीकल्चर पाई सपोर्ट दउची, फार्मर कल्टीवेशन पाई सपोर्ट दउची, इट इज नॉट ए जोंडे की फॉर लाइवलीहुड। देन दिस इज द सीएम किसान स्कीम, सीएम किसान रो स्टेटमेंट करण कहला ना लाइवलीहुड सपोर्ट, दिस इज इनकरेक्ट। देन 2 3 ए सब करेक्ट अछि, जोंडे की देखले अरेंज द फॉलोइंग कमिटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन दिस इज वेरी डिफिकल्ट वन। मु डिफिकल्ट कैटेगरी मु लास्ट कहबी कि केते डिफिकल्ट, केते मीडियम रेंज एंड केबे केते आपनकर इजी क्वेश्चंस रहउची देखिबा। दिस इज कैटेगरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ईयर मन रखिबा, क्रोनोलॉजी सजेइबा, एवं एते भी फेमस कमिटी जो अनुसार पुराना कमिटी गुडा, तो सही अनुसार ता आंसर हलो बी। आंसर आपण देखिन बी, कोठारी 64 रे, चेलेया भोरा 93 एवं 2006 रे सच्चर कमिटी, तो सही अनुसार आपण बी आंसर करेक्ट हबो। So which of the following is not a dye? Which of the following is not a dye? Alizarin, ये आंसर भी माने इटा भी टिके डिफिकल्ट क्वेश्चंस अछि, डिफिकल्ट क्वेश्चन अछि। डी इज द करेक्ट आंसर, एंथ्रेलिक एसिड। सो बेसिकली जनरल साइंस रो क्वेश्चंस आसु नथिला, बट एथरो देखाउ जे जनरल साइंस भी क्वेश्चंस आसी जाईची किछि, तो सेही बळे आमे भाबियानी कि किछि पढिबानी आसुनी बदे। सो
Anthranilic acid is a precursor for the variety of organic compounds including some dyes, but it is not a dye itself. So alizarin is a red dye जोंटे कि dyeing textile use करा जाए. Fluorescein is a fluorescent dye commonly used in various applications including medical diagnostic, phenolphthalein and is an indicator dye जोंटे कि आपण पढ़ी थिबे इथाइल मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथेलिन जोंटे कि हमें +2 रे हमें पढ़ू मेडिकल रे जो लैब रे. Then IDCO. This question, consider the following statements regarding the Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation. See, all the options are correct except for option 4. All the options are correct except for option 4. It is written here that IDCO's function do not include land acquisition or the creation of a land bank for major and mega projects. This option is wrong because it does include land acquisition and also the creation of a land bank for major and mega projects. Okay, so the correct option is B. Which of the following statements is not correct? So option 4 is not correct, so accordingly the option B is our answer. So here is the explanation. The Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation was established in 1981 by an act of the government of Odisha, and you can see here it's written here that there is a statement 4 which says its function do not include land acquisition or the creation of a land bank is incorrect. Why? Because it does include land acquisition and the creation of land banks for various industrial projects. Fine. Okay, this question. This question related to CAG, Controller and Auditor General. Very easy question. देखो, choose the correct answer. Office of the CAG has been modeled on the basis of Advocate General under the Government of India Act. This is wrong statement. CAG is the impartial head of Audit and Account System of India. CAG can be removed by President on the ground of misbehavior. The term of office of CAG. So this is true. This is true. So A is wrong. एक सेकंड. B and D. हाँ, A नहीं, एटे नहीं, so B and D. Next. So B and D statement A is correct. Office of CAG. हाँ, sorry. A is incorrect. Office of CAG not model on the basis of Advocate General. CAG independent constitutional body and head of Audit and Account Department. ठीक अच्छे. Question conceptual question, but if you have concept जदि जानी थिबो एटा हे जिवो. Next. एटा आपन. So under which Mughal emperor the office of Mutasib जोटे कि सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल्स उपरे ये थिला. ऑफिस ऑफ मुतासिब इंस्टीट्यूटेड इन ओडिशा. शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं. सो बेसिकली औरंगजेब समय एटा हेतिला. औरंगजेब समय हेतिला. मुतासिब जोटे कि अपॉइंट कराउतला इस्लामिक मोरल कोड पई. बेसिकली तुम जानिथिबो कि औरंगजेब बेसिकली जड़े रेडिकल इस्लामिस्ट थिले. तो तांकर से माइंडसेट थिला कि इस्लामिक मोरल कोड बेसिस रे ही सी पढ़ेबे मान लोकों को सिखेबे कि पब्लिक केमिति शरिया लॉ को माने फॉलो करिवे. तांकर पब्लिक कंडक्ट हो मार्केट केमिति सुपरवाइज करा जिवो ता ऊपर से गोटे मुतासिब डिपार्टमेंट बनै थिले. ओल्ड इस्लामिक इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करथिले मुतासिब. बेसिकली अराउंड 1707 रे औरंगजेब डेथ है जानी. तापर लेटर मुगल्स आसिले. सो ओडिशा रे मुगल एम्परर अथॉरिटी जो एक्सटेंड होता खास करके यहाँ समय डायरेक्ट रूल करिया को स्टार्ट करते ओडिशा रे. हु वाज द लीडर टू मूव ए रिजोल्यूशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली डिमांडिंग द यूनिफिकेशन ऑफ ऑल ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट्स इनटू ए सेपरेट प्रोविंसेस ऑल ओडिशा. सो ये बहुत ही ये क्वेश्चन जोटे कि आम ओडिशा हिस्ट्री जो पढ़ाए से गुड़ा सब आम पढ़ू कि प्रथम थे ये मधुसूदन दास या कौन करते ना तांकर पॉलिटिकल कैरियर को छाड़ी देते. कांग्रेस रू सी पड़े जाते. कांग्रेस रू सी ओहरी जाइए केवल गोटे एम थिला कि गोटे सेपरेट प्रोविंसेस बनेबे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. सो ये मधुसूदन दास करेक्ट आंसर हम. गुड आफ्टरनून मलय, एम आई ऑडिबल?
सो ये सेपरेट मधुसूदन दास द फर्स्ट लीडर जी की रिजोल्यूशन मूव करते सेंट्रल एसडी असेंबली डिमांडिंग द यूनिफिकेशन ऑफ ऑल ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट इनटू ए सेपरेट प्रोविंसेस ही वाज प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जानी थिबो सो बहुत बड़ पर्सनालिटी उत्कल गौरव मधुसूदन दास देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन सर basically the interstate council was set up under article 263 of the constitution এটা ঠিক আছে statement in article 263 is the correct one then again is Punchi commission recommended establishment of interstate na this is not Punchi commission it is sarkariya commission so say it who answer ta bhule gala apan karo sarkariya commission so ये आंसर भूल गला so यदि 2 भूल गला ता माने ये ऑप्शन कटि गला ये कटि गला बाकी 1 is correct union home minister is the chairman of the interstate council is it correct union home minister anyone so union home minister is not so basically this is wrong so this statement is right so 1 and 4 sorry A is the correct answers so it discuss the matter of common interstate dispute how या suggestion policy for the better coordination पाई ये हुए so देखंतु 1 and 4 interstate council जोने established under 263 of the constitution which empowers the president to constitute गोटे body करिवे then आउ गोटे क्वेश्चन थिला कि पुंची कमिशन कथा एटा सरकारी कमिशन रिकमेंडेशन थिला नॉट ए पुंची कमिशन कोन रेकमेंड थिला कि सेंटर स्टेट रिलेशन उपरे इश्यूज देखिबा पे कोन रिलेशन इश्यू अछि देन प्राइम मिनिस्टर नॉट होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन नॉट होम मिनिस्टर similarly which climatic initiatives specifically support Himalayan glacier monitoring कौन क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन सो ये भी तुम्हें टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन लगी पारे फैक्चुअल तो अच्छी डिफिकल्ट ने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर National Mission for Sustaining Himalayan Ecosystem, one of the 8 missions under India's National Action Plan on Climate Change. The mission goal is to protect fragile Himalayan ecosystem, which include addressing issues related to glacier melt through research and monitoring. Then next, देखिबा which of the following statement is about yes. ये सारंकर माने economics part रे. So next question is which of the following statements about the global industrial pattern is not correct? The question is not correct. See, Japan, Germany and USA are the leaders in automobile production is a correct statement because all the three countries, Japan, Germany and USA are the major automobile production countries. Okay. And India and Bangladesh are major centers for textile and garment industries. Again, correct option because India is the largest producer of textile and garments whereas Bangladesh is the world's largest exporter of second largest exporter of textile and garment followed by China. And South Korea and Taiwan are known for shipbuilding and heavy machinery. Again, correct statement, correct option. Why? Because especially South Korea is a major shipbuilding, has a major shipbuilding industry. And option 4, Canada and Australia are primarily known for heavy industry rather than resource based industries. This option is wrong. The fourth option is wrong. So which of the following statements are not correct? So the correct option will be option D. Option D is not correct because Canada and Australia are both resource based industries rather than heavy industries. Okay. Then this is the explanation and next question. Okay. Yes, which of the following was the first major administrative measure taken by Congress ministry? हाँ ये आपनकर हिस्ट्री रो ओडिशा हिस्ट्री रो मॉडर्न ओडिशा हिस्ट्री रो पार्ट सो बढ़िया क्वेश्चन सेटा देखो केमिति क्वेश्चंस पचारि चंदी जे मॉडर्न ओडिशा टिके पढी थिबो से भलो से एटा को करि परिबो मॉडर्न ओडिशा जोंटा कि हरे कृष्ण महताब जे कि इंडिपेंडेंस परे प्रथम मिनिस्ट्री फॉर्मेशन करिथिले सेइथिरे कोन डिसीजन नैथिले एबोलिशन ऑफ जमींदारी सेटलमेंट ये गोटे इश्यू थिला बट एटा कोन एबोलिशन करिथिले फर्स्ट टाइम डिसीजन नै परिबे ना रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स यस जेतळे क्विट इंडिया मूवमेंट हेइथिला क्विट इंडिया मूवमेंट परे बहुत सारा लोकन को हमर माने इंडियन नेशनल्स को अरेस्ट कराइथिला तो सही समय तांको ये प्रॉमिस करथिले कि आमे जेटा सरकार गठन करिवु आमे तुमको छाड़िबु एवं रिलीज कराइथिला सो बी विल बी द करेक्ट आंसर एंड दिस इज रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर कांग्रेस मिनिस्ट्री 23 एप्रिल करथिले फर्स्ट मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर सो ये प्रॉमिस करथिले मे 1 रे से अनाउंस कर देथिले
कि भाई आमे छाड़बू सो वन बाय वन रिलीज करागला ये सारा डिसाइड करंतु एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चंस था गोटे अलग टेक्निकल See, actually, this question for the first time, actually, a question has been asked from welfare economics. See, which of the following best defines the concept of Pareto optimality? Pareto optimality. The correct option is B. The correct option is B. A situation where no one can be made better off without making someone else worse off. Sorry, pen stick. See, let us understand this through an example. For example, suppose आपन पाखरे 10 टा सेव अछि, you have 10 apples and you have two people A and B. आपन पाखरे 10 टा सेव अछि, आपन पर 2 टा लोक अछंती, आपन 5 टा सेव A को देइ देले, 5 टा सेव A को देइ देले, 5 टा सेव B को देइ देले. ताहले पैरेटो ऑप्टिमलिटी कोन कहउची? द सिचुएशन वेयर नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ. जदि आपन को A रो शेयर बढ़ेबार अछि ताहले आपन को B रो शेयर कमिया को पड़िबो. बुझ परले? दिस इज कॉल्ड पैरेटो ऑप्टिमलिटी. This is called Pareto optimality. That means A cannot be better off without hurting person B, and B cannot be better off without hurting person A. And next, suppose out of 10 apples, A को 7 दिया गला, B को suppose 3 दिया गला. बुझ परले? This is again Pareto optimality. Why? Because B cannot be better off without reducing the share of A. A cannot be better off without reducing the share of B. However, let's say there are 10 apples, but A को दिया गला 4 apples and B को दिया गला 4 apples. This is Pareto inefficiency, Pareto inoptimality. Why? Because here both can be better off. Here both can be better off by sharing the remaining 2 apples to both A and B. This is called Pareto optimality. So the correct option is B. Okay. Now next question. So explanation is here. You can go through the explanation. yes sir Consider the following statement and first incorrect statement. So under Article 124 of the Indian Constitution, a Supreme Court judge can be impeached. It is correct statement. The ground for impeachment of judge pertain to incapacity and prove misbehavior. This is also correct statement. So A and B are correct हे गला. Incorrect statement कहिछि A and B এটা হবো নাহি. Now C or C and D এ ভিতর কোটা হবো? A minimum of the president can pardon the judge. This is wrong. minimum of 100 MP. Minimum of 100 MP are required to initiate the impeachment motion in the Lok Sabha. This is true. Now this is wrong. This is wrong. 100 MP. So C and D. So C and D is the answer. Incorrect answer. 100 or 50 होगा ठीक. ये खाली 100 MP देइछि. 100 MP and 50 in Rajya Sabha. 50 in Rajya Sabha. এটা সেইথিপাই ভুল. So 100 MP required to initiate Lok Sabha and 50 in Rajya Sabha. এটা ହେଇଥିଲେ এটা true ହେଇଥାନ୍ତା. So these are incorrect statement hello. Sir again ये questions आपण कोन देखुछन? ये questions polity which linked with current affairs. Current affairs. तमाने आपण क्वेश्चन देखुछन कि करंट अफेयर्स रो केते इंपोर्टेंस रहिछि. पॉलिटी पढिया सहित फंडामेंटल पढिया सहित आपण करंट अफेयर्स को लिंक करियो पड़ियो. Conceptual question. Conceptual questions. किमती सेट कर देंगे. So this explanation तो कहि देला हम. Next sustainable development goal. এটা economic question. So the next question is, consider the following statements regarding sustainable development goals and their indicators. See, this is a direct question. Direct question जो माने sustainable development goals पढ़ी थी भल से माने question को आंसर करि पारथिबे. Direct questions अछि because see the 2030 agenda for sustainable development adopted by all United Nations members states in 2015. केतरा goals थिला 17 goals and 169 targets. The correct option, so first option is correct. Second option, sustainable development goal 1 targets poverty ending in all its forms everywhere.
using indicators like the proportion of people living below the national poverty line. Again, correct statement. The leave no one behind principle is central to the sustainable development goal, emphasizing disaggregated data collection to identify vulnerable groups. Again, correct statement. But this sustainable consumption and production is primarily addressed under Sustainable Development Goal 14. This is correct. This is wrong statement. Why? Because this particular statement, this sustainable consumption and production is primarily addressed under Sustainable Development Goal 12, not 14. Okay. So focusing on efficient resources using and reducing waste. So this is our correct wrong. So out of this, which of the following is our correct? So 1, 2, 3 only. 1, 2, 3. Option A is the correct option. Okay. So this is the explanation. This is the explanation. Sorry. Statement 3 is correct. Where the leave no one behind principle is a core tenet of the Sustainable Development Goal, which aims to ensure that progress is made for all people, including vulnerable groups, by disaggregating data. Where our statement 4 is incorrect. That is, sustainable consumption and production is primarily addressed under Sustainable Development Goal 12 and not 14. Okay, the Sustainable Development Goal 14 is life below water. It's about what? It's about protecting our marine population. Okay, thank you. वन इंटरेस्टिंग थिंग इज आपण माने देखि परथिबे कि क्वेश्चन कोन भलिया पढिची जोंटा कि हमें डिस्कशन भी करू बारंबार कि क्वेश्चंस रो एटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चालीची पीरियड चालीची जोंटा कि 2015 रु 2030 सो 15 वर्ष भीतर आपण एवरी ईयर चाहे प्रिलिम्स हो या मेंस हो या ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आसुची एवं यार न्यूज रे सबळे रहउची तो एते फैक्चुअल पचारिची आपण देखंतु 14 देई दिची 12 जगह 14 तो आपण 17 जो गोल अच्छी ताकू मन रखी दियंतु कहीं प्रिलिम्स भी काम आसीबो मेंस भी काम आसीबो आपन को एसे रो भी काम रे आसीबो यू विल गेट बेनिफिट इन एसे आल्सो देन दिस वन सेक्शन 4 दिस इज पॉलिटी पार्ट कहि पारंती बट मेनली फैक्चुअल क्वेश्चंस Section 4 of the RTI Act states that the obligation of the public authority to maintain records and publish information within days of enactment of the Act. Act ro enactment कथा कुआ होची. So it is not about जदि क्वेश्चन था कि भाई अप्लाई करिवार केते दिन भीतर जदि आपन को करिया पड़थां ताटे 30 डेज हेइथांदा बट एठी कहिछि क्वेश्चन जदि एठी लास्ट रो पढिबा आपन भूल कर देबे ना ये आंसर भूल हेइ जिवो आपन करो. सो आपन करो एठी कहि जदि क्वेश्चंस चेंज करदा कि आपण एप्लिकेशन फाइल करिवार केते दिन भीतर आछिबा दरकार सेठी हेइतले 30 डेज हेइथांदा बट एठी कहिछि एनाक्टमेंट रो सो 120 डेज ए इज द करेक्ट आंसर. सो आरटीआई एक्ट सेक्शन 4 रे अछि कोन ना पब्लिक अथॉरिटी मस्ट मेंटेन एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन विद इन 120 डेज फॉर द एनाक्टमेंट ऑफ द एक्ट जोंटा कि पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल हवा पई सिटीजन प्रति प्रोएक्टिवली डिस्क्लोजिंग देयर इंफॉर्मेशन. Then this is part of तुमर रामसर साइड एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कहना रामसर साइड ऊपर क्वेश्चंस जो पचारि जी जो फैक्ट्स पचारि टिके आउटडेटेड माने पुराना फैक्ट्स को नेकी पचारि देखंतु रामसर साइड इज डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन इट्स इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस एंड बायोडायवर्सिटी रिचनेस ये जानि जनि समझते दैट इज ट्रू. देन चिलिका लेक वाज द फर्स्ट इंडियन साइट टू बी एडेड टू रामसर लिस्ट. सो ये भी ट्रू अछि बट कथा हला नॉट ओनली चिलिका एंड केवलादियो नेशनल पार्क जो राजस्थान में अच्छी दीटा जाक डिक्लेयर कराइला सेम टाइम रे तो केमिति आमे गोटे को फाइंड आउट करि पारे बट एठी सेमती ऑप्शंस नाही आपन को पाखरे. देन अगेन एज ऑफ 2023 द इंडिया हैज मोर देन 75 रामसर साइट्स. यस इंडिया हैज मोर देन 75 2023 एबे तो 90 प्लस हे गलानी आपन करो बट 2023 से थिला तो सेही अनुसार जे देखिबे 1 2 3 हेई पारे किंबा 1 एंड 2 भी हेई पारे जदी 2023 सुधा किछि डाटा देखौछि कि 75 ही थिला ताटो अधिका नथिला बट 2023 रो डिसेंबर सुधा आपन को देखिबा को मिलिबो कि देखौछि किछि डाटा रे कि पाखापाखि 80 पाखापाखि हे जाइछि तो सेही अनुसार टिके कन्फ्यूजन अछि. सो ए आउ डी हेई पारे. सो हमर आंसर भी सेमिति डी आमे देइछु आपन डी माने कि करंतु काइना ये लेखिछि चिल्का लेक केवलादियो देखि ए 2 जदी काटी दबा सेमिति किछि हमर ऑप्शन बेसिकली 1 and 3 भी हेई पारे बट मोस्ट करेक्ट आंसर आपन करो डी आंसर हबो. देन द रिट मैंडामस माने कोन सर आसंतु
listen, Article 32. Article 32 is read power of Supreme Court. Article 226 is read power of High Court. There are 5 extraordinary read: habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition, and quo warranto. And here question is about mandamus. Mandamus is means it is mandatory. The court compel a public official to perform a public duty. This is mandamus. Release a person from illegal detention. This is habeas corpus against illegal detention. Transfer a case from lower court to higher court, certiorari. And question the legality, quo warranto. Okay, so this is option C. Compel a public official to perform public authority. Samudra and mission. So this is part of तुम्हारा current affairs एथरा बहुत कम क्वेश्चंस आसी आपण देखिबे current affair रे माने समुद्र एडमिशन तो न्यूज रे ही थिला रिसेंटली न्यूज रे थिला देखंतु मते लागुची क्वेश्चन से माने लास्ट 15 दिन पूर्व बनै जंती ये किछि दिन पूर्व प्रधानमंत्री जाइथिले ताको ये करिया पई Samudra mission, the development of the Samudra mission will enhance India's capability in nuclear submarine development. So ये statement 3. So जो माने एग्जाम दे जंती के thumbs up करंतु जो माने एग्जाम दे जंती आ जो माने एग्जाम देई नाहंती तांको पई भी ये जानिबा बहुत जरूरी कि कोन टाइप रो क्वेश्चंस आसुची केमिति पढिले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करि परिबे काहेकि ना आपण खाली आइडियली हे कि बसी परिबे नाही. You need to follow the trends कि केमिति करंट अफेयर्स पढिबा कोन पढिबा ये सब जानिबा बहुत जरूरी. Then so this statement is wrong. Basically questions पचारिची correct answer जोंडे कि this question Samudra mission aims to develop self-propelled manned submersible. Samudra mission aims to explore deep ocean up to 6,000 meters and Samudra mission aims to boost marine tourism. So basically जो देखिबा B is the correct answer. ये भी marine tourism main aim नुह. So 2 and 3 is about Samudra mission. So Samudra mission is a project by Indian government to develop a self-propelled main submersible called Matsya 6000 to carry 3 people to depth 6,000 meters in the ocean for deep sea exploration. So statement 1 is incorrect kahinki na mission is not related to nuclear submarine. Here it is asked about nuclear submarine. So ticket trick अछि माने questions देखिए कि फैक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट हो जदि आम कैटेगरी नहीं जाए कैटेगरी को डिफिकल्ट 2 and 3 आर करेक्ट आम देखिले एवं 4 इज इनकरेक्ट कहीं प्राइमरी गोल थिला साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एंड रिसोर्स असेसमेंट नॉट अबाउट जाई बुली की जीवा टूरिज्म रे जाई आम बुलिबा. ओके इट इज नॉट अबाउट दैट. द नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिकली रिगार्ड aquaculture policy India's aquaculture policies correct. So प्रधानमंत्री आमे लास्ट को कट भीतर भी डिस्कशन करबा केते क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल अछि केते क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल अछि केते क्वेश्चन इजी लेवल अछि वी विल डिस्कस वाच टिल द लास्ट एंड यू विल गेट क्लियर कट आइडिया पाई जिबे आपण जे आपण मेंस लेखुचंती ना आउथरे प्रिपरेशन करिया को जाउचंती. सो दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एम्स टू एनहांस फिश प्रोडक्शन एंड बूस्ट एक्सपोर्ट. राइट जो माने एग्जाम दे आसो गोटे गोटे थम्स अप दियो कमेंट दियो कोन आंसर हबो तुम अकॉर्डिंगली टेल मी कोन आंसर हबो आपन के. सो दिस राइट फिश है ना मत्स्य फिश. द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी रेगुलेट्स aquaculture activity in brackish water and coastal area. This is also right. And the National Fishery Development Board NFDP is responsible for promoting modern aquaculture practices. And FAO na eta jo lekhichi legally binding eta bhul hala, so eta wrong. So 1 3 2 and 3 is right. So correct answer is A. Correct answer is A. What is the limit, time limit provided? Okay, this is time limit provided for making complaint under prevention of sexual harassment of women at workplace. So it is basically Visakha guideline. Visakha guideline. Visakha versus state of Rajasthan. Visakha versus state of Rajasthan. So Visakha versus state of Rajasthan.
what is the time limit provided for making a complaint under the Prevention of Sexual Harassment of women? Based on this, it is what I call that. Say next thing. D answer. So answer is D. This is same. Sexual harassment of workplace, Visakha guideline. This is detailed, but yes, the D is the correct answer. Aqua. एंडेमिक स्पेसीज जो देखिए देखो तो कि एंडेमिक स्पेसीज ऊपर पचार कि एंडेमिक स्पेसीज कौन कि एंडेमिक स्पेसीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक जियोग्राफी समस्त गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु आपण सांग साथी सहित आपण इन्फॉर्मेशन एठू जहां पाइबे जोंडे मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पाइबे सो एंडेमिक स्पेसीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन दैट इज करेक्ट वन एंड नीलगिरी थर इज Nilgiri Tar basically is endemic to the Western Ghats. This is also right, but endemic species always fall. This is a lekhidela. Mu exam purve koichi always, only, all eso jo फसी जिवे केबे फसिबे नाही. So ये wrong answer अछि. So correct answer is आपनकर A option. A option is the correct one. A option is the correct one. So देखो explanation. Not all endemic species are critically endangered. That is basically key. That is the indication to get the elimination. So this is also a very important questions regarding UPSC. So UPSC is very factual question. Part XIV. UPSC is a constitutional body. Article 315 to Article 323. It comes under UPSC and all state public service commission. So it is a factual question. Part XIV. Next. Factual question. Yes, it is delimitation. It is important question. Delimitation. Yes, so delimitation is the process of redrawing boundaries of Lok Sabha and state assembly constituency to represent change in population. It is true. The delimitation commission is appointed by the President of India and its order have the force of law and cannot challenge in any court. True. The primary objective of delimitation is to ensure that all constituency have roughly equal population of holding principle of one person one vote, and it is every 10 year. The President appoint delimitation commission every 10 year, and the current delimitation exercise based on 2000 census and mandate after the first census following 2016. So all four are true, all of the above. This is the correct answer, all of the above. So this is delimitation commission appointed by president, and same सब statement true अच्छे थे. गोटे साइड डाउट कोन थिला गोटे हमें देखिथिले Last statement. Last statement. The current delimitation exercise based on 2001 census with the next one mandated after. Mandated. So it is not compulsory. It is a direction given. Mandated after. ठीक अच्छे statement. So correct answer है ला अपन करो D होगा. All of the above. So एटा बहुत ही easy questions, but जे ओडिशा हिस्ट्री टिके भल से पढ़ी थिबो किंबा इंडियन हिस्ट्री विषय बहुत साइमल्टेनियस नॉलेज थिबो देन ओनली आपण एटा भल से करि परिबे. सो चिंता करंतु ओडिशा केबे एनेक्स करथिला. ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर्मली एनेक्स्ड ओडिशा इनटू ब्रिटिश एम्पायर केबे फॉर्मली एनेक्स करा गला. सो ब्रिटिश ओडिशा को एनेक्स ओडिशा बेसिकली 1803 रे 1803-4 रे बेसिकली ब्रिटिश अंडर को आसिला. सो 1803-4 रे किए थिले हमर गवर्नर जनरल. सो ई क्वेश्चन टिके ट्रिक अछि. ट्रिक कोन अछि आपन को दीटा आंसर एटी आसी पारे. कथाला क्वेश्चंस पचाछि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जदि 1803 देखिबे सेही समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नथिला के. सेही समय थिला के गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले. देन आपन को लागियो भाई एठी तो तले 1803 रे तो हबनी
So that is why questions ଆସିଛି କ'ଣ ନା formally annexed Odisha into a British empire. So formally tamane already they have basically controlled the Odisha part in 1803. जदि आमे by statement जिबा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सही समय आपनकर वारेन हेस्टिंग नथिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल. लॉर्ड कॉर्नवालिस भी गवर्नर जनरल थिले and Lord Wellesley भी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले. So only one option is left is Lord Dalhousie. So D will be the correct answer. So ये questions को दीटा आंसर हे पारे. वेलेस्ली हबज केतेबेले जदी हेई थांता, केतेबेले हेई थांता जदी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल देई थांता. क्वेश्चन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल देइनी ता माने आपण ये जानि रखंतु कि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल देइनी आमे वेलेस्ली मारी परिबा नै. जदी हां ये प्रिंटिंग मिस्टेक हेइतिबो ओपीएससी ताकू बाहर कर दबा ए क्वेश्चंस को हटे दे पारे. बट करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन विल बी लॉर्ड डेलहाउसी. अदरवाइज जदी एटा को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या हटे कि बेंगल करियो देन वेलेस्ली विल बी द करेक्ट. सो मु इनिशियली वेलेस्ली दउथली देन तापरे सी मु जानि सुनि एटा देली देन तापरे आपण वेलेस्ली रखिबेनी. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. काना वेलेस्ली समय एनेक्स हेइतिला, एंग्लो मराठा वार हेइतिला माने अछि, सेकंड एंग्लो मराठा वार तापरे एनेक्स हेइतिला. बट क्वेश्चंस अनुसार आम आंसर देखु. Which one among the following does not match properly the Nobel Prize category with its 2024 laureate? So ये 2024 Nobel laureate ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपनकर पीस रे नार्गिस मोहम्मदी. So A is the correct answer. A is the correct answer. आमे देखले नोबेल 2024 रे तांको अवार्ड करा आइतला. Then who made history is the first black man. Who made history as the first black man to win the Oscar for the best costume design at the 97th edition of the Academy Award. Academy Award. So basically this is also current affairs questions. So correct answer is Paul Tazewell. Paul Tazewell. A is the correct answer. Paul Tazewell. Paul Tazewell is the correct answer. So this is history प्रथम black man जे कि costume design पाई पाइथिले. अगेन दिस इज क्रोनोलॉजिकली आपण जे सजाय करी करबो भीतर जोने कि हिस्ट्री रो पार्ट बृहन्यका उपनिषद, देन मनुस्मृति अर्थशास्त्र मिलिंदपान, मनुस्मृति अर्थशास्त्र मिलिंदपान. सो करेक्ट आंसर है प्रथम आसिला उपनिषद बृहल्लरण्यका. बेसिकली उपनिषद जो बृहल्लरण्यका ये बृहन्नरण्यका को जाए ताको एटा बेसिकली प्रथम आसीथिला ड्यूरिंग वैदिक एज रे. देन तापरे आसीथिला अर्थशास्त्र मौर्यन एज रे. देन तापरे आसिला आपनकर मनुस्मृति लेखा हिथिला. देन तापरे डी हला मिलिंदपान कोन मनिंदर आउ आपनकर जण आपनकर तांकर गुरु बुद्धिस्ट ये तांको भीतर जो डिस्कशन होइतिला मनिंदर तांको स्टोरी की कन्वर्जन होइतिले नागार्जुन तो तांको भीतर एटा रखितिला. सो करेक्ट आंसर विल बी डी. सो बृह एटा को जो कहउतिली एटा क्वेश्चंस ता टिके माने जदी काढी दे पारे काढे एटा दरियनका हबो बृहत दरियनका. सो बृहत दरियनका बेसिकली उपनिषद पार्ट ऑफ यजुर्वेद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद डेटिंग बैक द प्री बुद्धिस्ट इरा. अर्थशास्त्र जानते कौटिल्य लिखितिले, चाणक्य जोंडे कि मिलिटरी स्ट्रेटेजी पे लिखिथिले 4th सेंचुरी बीसी. मनुस्मृति लीगल टेक्स्ट जोंडे कि मानु लिखिथिले, सेज मानु हिंदू धर्मशास्त्र उपरे बेसिकली लॉ बुक भले माना जाए, फर्स्ट लॉ बुक 2nd and 3rd सेंचुरी बीसी लिखिथिले. देन मिलिंदपान बुद्धिस्ट टेक्स्ट थिला, फर्स्ट बुद्धिस्ट जोंडे कि 2nd सेंचुरी बीसी अराउंड. डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मनिंदर मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेज नागसेन, सॉरी नागार्जुन नागसेन. सो समस्त कमेंट दियो कमेंट सेक्शन में एवरीवन गोटे लाइक दियो, लाइक शेयर करो. मोस्ट एक्यूरेट आंसर पाइबो, मोस्ट एक्यूरेट आंसर. देन दिस वन इकोनॉमिक सेशन, इकोनॉमिक सर आछन हम. See, the question is, consider the following statement about India's national determined contributions. See, India has committed to reduce emissions intensity of its GDP by 45% by 2030 from 2005 levels. Yes, this statement is correct. Correct option. मैं बुझेबी एटा माने कौन, जस्ट बुझेबी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस see the answer.
Statement 2, India aims to achieve about 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel sources, that means renewable sources, by 2030. Again, correct statement. And India's updated NDC is linked to Panch Amrit announcement made at COP26. Again, correct statement. So the correct option is the 1, 2 and 3. All three are correct. Now, what do you mean by this emissions intensity of its GDP? Emissions intensity of GDP, it means that how many units of greenhouse gas emissions, how many units of carbon dioxide or greenhouse gas emission a country produces per unit of GDP. For example, मैं आपको example दूँ देखो. Suppose in 2005 रे India 1 crore worth of GDP produce करिवा पाई. In 2005, to produce 1 crore worth of GDP, India was emitting, let's say, 100 tons of CO2. So कोटी टंकार GDP produce करिवा पई India generate करतुला 100 tons of CO2. तामाने इट कौन लिखा है? India has committed to reduce the emissions intensity of its GDP by 45% by 2030. तामाने जदि 2005 रे 1 कोटी टंकार GDP produce करिवा पई 2005 रे कोटी टंकार GDP produce करिवा पई 100 units of जदि carbon dioxide India generate करतुला by 2030 कौन? By 2030 India has decided to reduce this CO2 emission by 45%. That means by 2030 to produce 1 crore worth of GDP, India should be producing 55 tons of CO2. या माने होची से बुझ पड़ले. So this is all three are correct, and here is our explanation. See, all three statements about India's nationally determined contributions are correct. India has committed to reduce the emissions intensity. Correct statement. Second statement is also correct, and third statement is also correct. Now next question. बहुत बढ़िया सर. माने आपण देखिले कि आपण कॉन्सेप्चुअल भी क्लैरिटी पाई जाउछंती डिस्कशन रे एनालिसिस रे. सो हो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. माने हद हे गला भाई ये क्वेश्चंस केमिति बनउछंती माने कोन पाई बनउछंती तांकर पर्पस कोन यू नेवर नो. डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कि जी न्यूज रे थिला, बट डेप्यूटी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बहुत जन अछंती. सो रिसेंटली हेची जो सेटा कहया पड़िबो. सो सीएल अनीश दयाल सिंह हिंदी न्यूज रे देइथिला. आपण माने जदि न्यूज पर पढुथिबे, जदि भलो से पढुथिबे ताको लेखिथिबे, जदि आपण ताले एटा आंसर देई परिबे ना. सो सी अनीश दयाल सिंह. देन दिस इज आल्सो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन बट इजी वन. 3rd मार्च बेसिकली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ डे हो. सो ए जो तीनटा को आपण चारटा को कंपेयर करिया पई कंपेयर करी कि से देइची. सो जहा अछि सो सेहा ठीक अछि. सो 1 A 2 B जोंटे कि C 3 and 4. So this is A is the correct answer. So factual जिनस अछि आपण जानि परिबे. सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3rd मार्च को सेलिब्रेट करा जाए. 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करा जाए. 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे करा जाए. 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूज डे हमें सेलिब्रेट करू. सो ये आपण डेट टाइमलाइन पाई गेले. देन अगेन ये करंट अफेयर्स रो थाए. 38th नेशनल गेम रो थीम कोन अछि? 38th नेशनल गेम रो समस्ते फर्स्ट ऑप्शन दिहाई जे एठी जानी सुनी कि तुमे फिट इंडिया मारी की आसो, बट बेटा तुक्का मारने से वो बहुत पछताना पड़ता है. तो यहाँ पश्चाताप करोगे अगर फिट इंडिया मार के आओगे. आंसर ग्रीन गेम्स है. इट्स नॉट अबाउट फिट इंडिया. बेटा तुक्का नहीं मारना है. मारी सारी थी वो बर्तन तुक्का मारी सारी थी वो जहां जाइछो. सो द ऑफिशियल थीम 38 ग्रीन गेम्स एज अनाउंस्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. द गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड उत्तराखंड जोंडे की ऑलरेडी हेई सलानी. द थीम जोंडे की एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी से पई कराइतला. सो दिस वन अगेन हिस्ट्री हम कहबी कि हिस्ट्री बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पचारि. जदि आप नॉर्मल भल से पढ़ी रेगुलर मोर जेतिक एरिया मु कवर करे हिस्ट्री से एरिया रू पूरा 100% क्वेश्चंस आसी जोटा कि आपण माने जे पढ़ी. सो परमानेंट सेटलमेंट 1793 परमानेंट सेटलमेंट माने 1793. ब्रिटिश रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर मराठा डिफीट जोटा कि 1803. देन इम्पोजिशन ऑफ बेंगली एंड स्लेवरी एबोलिशन 1843 एंड साइमन कमिशन. ये साइमन कमिशन जो आम ओडिशा गोटे सेपरेट स्टेट फॉर्मेशन होउतला ता ऊपर ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन थिला. सो करेक्ट आंसर इज जहा अछि
सेहा ठीक अच्छी सो जहाँ अच्छी सेहा ठीक अच्छी सो ए इज द करेक्ट आंसर सो जदि किसी कार डाउट अच्छी जार किसी प्रॉब्लम्स अच्छी लेट मी नो आम टेलीग्राम ग्रुप अच्छी जॉइन कर ये एनालिसिस रो पीडीएफ पाई समस्ते आमे जो एनालिसिस करूछु आज तार पीडीएफ यू विल गेट फ्रॉम आवर टेलीग्राम आईडी ऑफिशियल ओएस हब ऑफिशियल टेलीग्राम ऑफिशियल ना हला ओएस हब ऑफिशियल से पाई जिवे आपण यार डिटेल पीडीएफ जो थे आपण एनालिसिस सहित सेटा पाई परिवे सब किसी डिटेल से देन ये आमे चारिटा ऑप्शन केमिति कौन है परमानेंट सेटलमेंट जोटा कि इकोनॉमी डिस्ट्रेस थिला आहुरी बढ़े देला परमानेंट बेंगल बिहार एंड ओडिशा 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड जॉन सोर ताको इंप्लीमेंट करले जॉन सोर कमिटी बनैथिला लॉर्ड कॉर्नवालिस ताको इंप्लीमेंट करके सी भागी पळे गले एठू देन जॉन सोर आसिले 1793 रु 1798 सी ताको इंप्लीमेंट करले एवं तापरे ब्रिटिश मराठा को हरे की रिऑर्गेनाइज कला आम ओडिशा को जमती बेंगल पार्ट रे गला जोंटे कि बालेश्वर रीजन देन मद्रास है तुम गंजाम वगैरह ये मद्रास अंडर को पड़ेगा देन सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर सेपटे वेस्टर्न ओडिशा को पड़ेगा तो ये सब एंड दैट इज वाई ओडिशा स्पीकिंग पीपुल जी की हिंदी कहवा को बाध्य करागला कहीं सेंट्रल सेंट्रल ये को पड़ेगा प्रोविंसेस को ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज ज्योग्राफिक क्वेश्चंस द इंडियन रिवर्स so Indian rivers and tributary Chambal and Bhima tributary Kaveri Nayal then Krishna Banas and Godavari Manjra basically river main river and tankara tributary main river and tankara tributary so correct answer is A hela Chambal count ta tributary hela Banas कोठी अछि बानस रिवर किए कहि परिबो कोन जगह रे अछि बानस रिवर को देन बी हला 2 कावेरी नयाल कावेरी हला ट्रिब्यूटरी हला नयाल देन सी हला बेसिकली भीमा कृष्णा रे जानिचो बहुत पॉपुलर ट्रिब्यूटरी एंड गोदावरी रो मांजरा सो सेही अनुसार आपण बी इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर सो पाई परिबे चंबल रिवर जोंटे कि चंबल हला कहार ट्रिब्यूटरी यमुना रो एंड चंबल ट्रिब्यूटरी कौन ना बानस जोटा कि चंबल रिवर नॉर्मली राजस्थान ये बॉर्डर रे आपण पाई परिबे सिमिलरली ओडिसा रो एरे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस ये भी जे कि फिजियोग्राफी ऑफ ओडिशा खाली जदी पढिथिबो ये आंसरटा करि दबो फिजियोग्राफी ऑफ ओडिशा जदी पढिथिबो ये आंसरटा करि जो सी इज द करेक्ट आंसर ए हला 3 महानदी ओंग ब्राह्मणी कोन 1 शंख तार बैतरणी हला रारू एंड सुवर्णरेखा देव सो महानदी ओंग रिवर इज इंपोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर and their major tributary of Mahanadi include Sionath, Hasdio, Jonk and Tel river. Brahmani Shankha. Brahmani river is formed by union of the Shankh and South Kel river in Raurkela and Shankha is a tributary forming part of Brahmani system. Baitarani and Diya river is one of the major tributary of Baitarani river flowing through Mayurbhanj district Odisha and Subarnarekha Raru तारा tributary. So ये तुम्हारा से अनुसार C is the correct answer 5. Then who is the first to issue gold coin? देखो गोल्ड कॉइन आमे इंडिया रे बनै नथिलु जते पर्यंत बाहरु आसी नथिले पोस्ट मौर्यन समय रे पोस्ट मौर्यन खास करके सुंगा कानवा एठी इंडियन थिले से माने सातवाना बट सही समय रे इन्वेजन भी हेतिला फॉरेन इन्वेजन एंड फर्स्ट इन्वेजन हिसाब रे इंडो ग्रीक्स आसी थिले इंडिया को एंड इंडो ग्रीक्स रो तांकर जोंटा कि क्राफ्ट्स थिला कि से माने कॉइन बनौथिले एंड दैट टू gold coin. So Indo-Greeks are the first one to issue gold coin. Indo-Greeks were the first one to issue gold coin. So देखंतु direct class notes रे easy questions अछि एटा. So the Department of Social Justice and Empowerment is recently signed MOU with which organization to enhance public awareness about social justice scheme? Ministry of Defense, National Human Rights Commission and National Legal Service of NALSA. NALSA very important guys, very important. NALSA ऊपर आपन knowledge रहिबा काना NALSA रो knowledge ऊपर प्रीलिम्स रे भी आसे एंड मेंस रे भी आसे सो सेहि पई एटा को क्वेश्चंस आसी जे न्यूज रे भी थिला सो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ NALSA to enhance public awareness about social justice scheme. Basically NALSA कोन NALSA टा कोन गोटे लीगल
एड भाया काम करे जी कि गाँ गाड़े बुले बुलिकी इनफॉरमेशन स्प्रेड करिवो एवं लोकन को तांकर जस्टिस विषय तांको अवेयरनेस क्रिएट करिवो ओके क्लियर नेक्स्ट देख अनवरत चर्चा चलची तुम सहित आमे थकी गलुनी धीरे धीरे so the match the initiative with its year of launch जोंटा कि स्कीम रिलेटेड आउ एमिति वर्ष वर्ष देले माने गोटे डिफिकल्ट तो हम डेफिनेटली बट करिया को पड़िबो किछि ऑप्शंस नाही सो आयुष्मान भारत जोंटा कि 2018 रे हेइथिला नेशनल स्किल लेवल 2015 बट एटा करि परिबो बेसी किछि डिफिकल्ट नाही देन एमजी नरेगा 2006 रे माने जेतले यूपीए 1 गवर्नमेंट थिला एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना मोदी जी आसिला परे करिथिले सो जोंटा कि 4 रे जो 14 रे सो ये इज द करेक्ट आंसर आपण माने देखि परिबे सो डिफिकल्ट नुह एटा जोंटा कि आमे लागुची डिफिकल्ट बट डिफिकल्ट नुह देन हिस्ट्री क्वेश्चन जेमती तुमरा आमे बहुत थरा एटा भी पढैची राणा सांगा बैटल ऑफ कानवा कहा का भितर होइतिला किए कहि परियो छ कमेंट सेक्शन में जवाब दियंतु कि कहा का सहित होइतिला राणा सांगा आ कहार सहित देन महाराणा प्रताप बेसिकली बैटल ऑफ हल्दी घाटी देन राव चंद्र सेन जोंडे कि स्ट्रगल अगेंस्ट अकबर एंड राजा मान सिंह जोंडे कि कंक्वेस्ट ऑफ ओडिशा सो ए विल बी द करेक्ट आंसर सो प्रथम दुईटा तुम प्राय आंसर बाहि जीवो ओके एई थ्रु तुम आंसर पाई जीवो तुम बेसी किसी सेपट को जीवा दरकार नाही नेक्स्ट आमे देखिबा इंडियन इकोनॉमी ऊपर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस conceptual clarity तुमरो हे जीवो सार करिवे So the question is, okay, sir. The question is consider the following statements regarding the structural transformation of Indian economy. Let's see these options. India's economic growth since the 1990s has been primarily led by the services sector with a relatively smaller contribution from manufacturing. Correct statement. आपण जानिथिबे जे 1990s रे हमें लॉन्च करले कोनो एलपीजी रिफॉर्म्स लॉन्च करले सो सिंस द लॉन्च ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स actually the contribution of service sector to GDP has started increasing. Okay, the contribution of service sector to GDP started increasing, whereas the contribution of manufacturing to GDP actually started declining. So this statement is correct statement. India's economic growth since the 1990s has been primarily led by the services sector with a relatively smaller contribution from manufacturing. The second statement is also correct. The Make in India program initiative aims to increase the manufacturing sector's share in GDP to 25% and create 100 million additional jobs by 2022. Again, correct statement. According to this Make in India program, the government actually decided to increase the manufacturing sector's share in GDP to 25% and also to create additional 100 million jobs by 2022. Correct statement. Now, third statement is, despite rapid economic growth, the share of the agricultural sector in India's GDP has been consistently declined, whereas while its share in employment remains significant. This statement is also correct. Kahin apan janithibe, the share of agriculture to GDP is near about 17 to 18%. 17-18%. The share of agriculture to GDP is 17 to 18%, whereas the share of agriculture in employment is near about 40 to 45%. Employment is near about 40 to 45%. Okay, 40 to 45%. So, 45%. Okay, so this statement is also correct. Okay, the share of agriculture has been approximately near about 17 to 18%, whereas the share of agriculture to in employment is near about 40 to 45%. So third statement is also correct. And fourth statement is, the phenomenon of premature deindustrialization in India refers to the services sector growing rapidly without a strong manufacturing base. Again, correct statement. Fourth statement is also correct. Kaina manufacturing sector actually जेतबेले एलपीजी रिफॉर्म्स को 1990s रे लॉन्च करा गला सेतबेले सर्विसेज सेक्टर रैपिडली ग्रो करिवा आरंभ हला एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्चुअली पछे गला बुझ पाले सो व्हाट इज कॉल्ड एज प्रीमैच्योर डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन द सैचुरेशन पॉइंट पीक को पहुंचे पूर्वरु ही in India de-industrialization started, okay, which is called as premature de-industrialization. So the option is
D. All of the above are correct. Okay. Now the next question. Okay. So this is the explanation. You can go through it. So, which of the following article of Indian Constitution provide that the law declared by Supreme Court shall be binding on all court within territory? This is answer C. B. Article 141. So, India we have independent judiciary and also integrated judiciary. So this under integrated judiciary, Supreme Court law is binding on High Court, we can say. So in the integrated judiciary also the unitary feature of the Constitution, independent is federal feature of the Constitution. So this is Article 141. So 141 of the Indian Constitution, that law declared by Supreme Court is binding on all court within territory of India, that any legal principle in USA it is not. USA Supreme Court and state court, high court are different. Established by Supreme Court must be followed by all lower court including high court, district court and other judicial bodies. सो आपण माने अगेन এই क्वेश्चनटा देखिले जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चनटा देखिले देखंतु यार करंट अफेयर्स रिलेटेड केते इंपोर्टेंस अछि या ऊपर सुप्रीम कोर्ट रो ऊपर न्यूज़ थिला या ऊपर एवं सेहि पई ये क्वेश्चंस पचारि छि ओपीएससी तो आपन को मु सब बेले हमर स्टूडेंट को जो मानक सहित मु कांटेक्ट आसे जो माने मोर गाइडेंस नियंती मु सब बेले पचारि कि भाई करंट अफेयर्स को सब लिंकिंग करिया बहुत जरूरी करंट अफेयर्स रो डायरेक्ट करंट अफेयर क्वेश्चन आसु किंबा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आसु तार सब्जेक्ट लिंक करंट अफेयर्स डेफिनेटली आसे तो ये आपन को जानिबा बहुत जरूरी G20 नॉट करेक्ट का देखो चिली ये कंट्री खाया पाइनी तार बेसिकली फिश बेस्ड इकोनॉमी केवल माछ खाती से माने बेसी तो ये माने कोड बेसिकली पूरा डेजर्ट एरिया G20 रे मेंबर केमती हे परिबे सो ये केबे भी मेंबर हे परिबे एटा देखा जाउची ब्लैटेंट जोटा कि इनकरेक्ट ब्लैटेंटली इनकरेक्ट सो चिली मेंबर G20 जोटा कि डी रे दिया छी सो 20 मेंबर अछंती जोटा कि 19 मेंबर सब कंट्री आउ EU अछंती दीज आर द 20 मेंबर्स ये सब आपण देखि पारे चिली इज नॉट ए मेंबर okay the foundational ideology of Hindustan Socialist Republic Association was inspired by so ये भी मुझको पढ़ाई छी तुमरो जेतले क्लासेस रे हमें नउथलु HS हिंदुस्तान सोशलिस्ट देखो आगे हेतिला HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन HRA हेतिला 2024 रे देन HSRA जाई कि 2028 रे जाई कि HSRA हला जोंडा कि भगत सिंह एठी बेसिकली रोल प्ले करूथिले सो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जोंडा कि आयरिश फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रगल और सिन फैन मूवमेंट रू से इंस्पायर हेतिला सो डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट हिंदुस्तान सोशल वाज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जोंथरे ब्रिटिश को हटेया पई से माने चलथिले से माने आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल इंस्पायर हेतिले एंड सिन फैन मूवमेंट द एचएसआर लीडर भगत सिंह थिले जोंडा कि एथरे इन्फ्लुएंस हेतिले तो सेथि पई ये आर्म रेजिस्टेंस थ्रू रे हटेबा को चाहुथिले देन अगेन सर this one polity section questions so which of the following fundamental right available only to Indian citizen and not to the foreigner again this is very important questions also polity रा एवं इजी क्वेश्चन जदि जने पढ़ी थिबो भल से देखो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये केवल इंडियन मान को मिली फॉरेनर मान को मिलनी फॉरेनर मान आसी एठी जाई किछि कहि परिबे नाही सो बी इज द करेक्ट आंसर सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जोंडे कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन नॉट टू द फॉरेनर कोन 15 16 19 29 30 देन आर्टिकल 19 गारंटी टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जोंडे कि केवल तुमको राइट मिली सिटीजन चिंता करंतु आमे सिटीजन इंडिया रो जाई कि बाहर कंट्री जी चाकरी करछि ताको मिलुची राइट मिलुनी बाहर कंट्री जी इंडिया रासी रहउछि ताको मिलुची राइट्स मिलुनी तो आम देश महान भारत माता की जय देन दिस क्वेश्चंस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंट मोस्टली ज्योग्राफी जो क्वेश्चंस मु देखुची
conceptual questions बेसी नहीं मोस्टली फैक्चुअल रिलेटेड क्वेश्चंस ये भलिया क्वेश्चंस आपण पाई परिबे सो करेक्ट आंसर कोन हबो ज्योग्राफी रो एटा सो करेक्ट आंसर देखंतु डेकान ट्रैप तो समस्त जानि जति ब्लैक कॉटन सॉइल B2 तो ये आछला सो सी इज द करेक्ट आंसर A3 जोने शिवालिक रेंज तुम्हारा फॉसिल रिच सेडिमेंटरी देन सिंह छोटनागपुर प्लेटो रो यूरेनियम मिले कोल मिले एवं सिंहभूम रे रिच आयरन और डिपोजिट सो सी इज द करेक्ट आंसर ज्योग्राफी रे सी इज द करेक्ट आंसर 3241 सो शिवालिक हिल्स जोंडे की फॉसिल रिच सेडिमेंटरी सो एज पर ग्लोबल हंगरी इंडेक्स 2023 ग्लोबल हंगरी इंडेक्स 2023 एज पर ग्लोबल हंगरी इंडेक्स 2023 सो इंडिया रैंक केते बेसिकली 111 गोटे इंटरेस्टिंग कथा हला कोन ना मु एबे गोटे कमेंट देखुची हमर स्टूडेंट रो जे कि हमर कोर स्टूडेंट कि सी कहि सर ओएस हब टेस्ट सीरीज रे नियरली 15 प्लस क्वेश्चंस आसीची जोंडे की एवं हिस्ट्री questions also came from sir daily classes and some questions are regularly Lalit sir asked during the classes. So thank you Achyutananda, I know you and you I think you are doing well and you have done well in this examination and all the best for your mains also and but कथा ले कि आमे सेही भलिया पढौचु एवं सेही भलिया हमर टेस्ट सीरीज रहूची एवं दउचु मध्य सो ये हला रैंक तो सेही अनुसार आगो को आमे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम आनिबा को जाउचु जो आपनकर मेन्स रे पूरा एला पर डिस्कशन पाई जिबे डेफिनेटली आपन सक्सेस हेबे मेन्स मेंटरशिप प्रोग्राम जो आपन को इंडिविजुअली मेंटर करा जिवो आपन को गाइड करा जिवो आपन स्पेशल फैकल्टी अछंती कोन कोन प्रॉब्लम हुए जेतरे एस्पिरेंट मेन्स पाई जानती कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड टाइम मैनेजमेंट बैलेंसिंग स्टैटिक एंड करंट टॉपिक्स जोटे कि मु बारंबार कहूची लैंग्वेज पेपर मेंटल एंड इमोशनल टूल सेल्फ डाउट ये सब प्रॉब्लम्स रुए ये प्रॉब्लम्स रो सॉल्यूशन हला तुमरो मेंटरशिप ये प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन हला मेंटरशिप कारण कोन आमे अप्रोच नबा क्वालिटी कंटेंट दरकार आंसर राइटिंग केमिति लेखिबा प्रैक्टिस करिबा केमिति आंसर राइटिंग अटेम्प्ट केमिति टेस्ट दबा ये सब डिटेल्ड मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम रे आपण पाई जिवे जदी आपण रियली क्वालिटी एजुकेशन चाहुचंती OAS Hub is the best institute for you आमे लिमिटेड सीट रुहे एवं सदा आमे समस्त को ध्यान दे पारिबु केवल 30 पिला ऑफलाइन रहउचंती सो क्वालिटी कंटेंट कॉम्प्रिहेंसिव जीएस मॉड्यूल कवरेज हबो आंसर राइटिंग जानिबे प्रैक्टिस करिवे आंसर राइटिंग एवरीडे बेसिस रे लाइव आंसर राइटिंग सेशन हबो ये सब आइडियल अप्रोच रहइबो कि कोन कोन आमे दउचु कॉम्प्रिहेंसिव आमे प्रोवाइड करचु ए क्लासेस रे प्रॉब्लम को आमे एड्रेस करिबु तुमर जहा जा अछि सो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस सिलेबस कवरेज हबो कंप्लीट प्रिपरेशन ऑन एसे हबो लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हबो एवं ता सहित वैल्यू एडिशन मटेरियल जो मिलिबो एवं करंट अफेयर कवरेज भी मध्य हबो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट सो हमर फैकल्टी जोनली हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी मु रहिबी आपनकर शिव सर रहिबे दीपक सर रहिबे सुजाता मैडम रहिबे श्रीनिवास सर रहिबे अर्पिता मैडम रहिबे ये सब मैडम माने रहिबे तो आपनकर जेमिति गोटे आमे ये दबा तो ये सब आमे सैंपल पर देखेबी कि कोन कोन क्वेश्चंस केमिति वैल्यू एडिशन रहिबो आमे आगो को डिस्कशन करियो बट आगो को क्वेश्चंस डिस्कशन करिबा देले जणा पड़ जिवो ओके नेक्स्ट है कौन ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल पिरामिड दिस इज एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस दिस इज एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल पिरामिड इन ए parasitic food chain the pyramid of member is always upright parasitic food chain this is very important parasitic रा सब थाए pyramid of energy upright so this is wrong pyramids of the biomass are always inverted in marine ecosystem this is right pyramid of energy never inverted yes upright थाए always so correct statement हला 2 and 3 this is wrong 2 and 3 is option B is the correct answer so eta देखि थिबे आपनकर food chain parasitic food chain pyramid number is inverted here it is given upright PDF with explanation telegram हां PDF with explanation आपन को टेलीग्राम चैनल रे डिटेल रे मिलि जिवो आफ्टर द क्लासेस एवं OAS Hub ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आपन डिस्क्रिप्शन पाई जिवे सेइथरे आपन जॉइन कर दियंतु OAS Hub ऑफिशियल OAS Hub ऑफिशियल यस आपण एक्सप्लेनेशन दबार रीजन है कि आंसर केते करेक्ट अछि हम तार जस्टिफिकेशन हमें देई दैछु तो आपण देखिले आपण निजे भी जानि परिबे कि
जोटा आम कहूँ मोस्ट एक्यूरेट आंसर राइटिंग जोटा कि आप पाइबे इट इज इनकम्पेरेबल विथ ओपीएससी आप आंसर की आखिर कंपेयर करेंगे पूरा सेम रहिबो सिमिलर कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एजीआई Okay, so this is about Attorney General of India. Attorney General is the senior most law officer. Senior most law officer of India. So consider the following statement. He is appointed by President and hold office during the pleasure of President. This is true. He has a right to participate in proceeding of parliament but without voting right. Yes, he participate in the proceeding of parliament. He also participate in cabinet meeting and he must have qualification equivalent to Supreme Court judge. Yes, it is also true. His remuneration is fixed by parliament through a law under article of the constitution. This is wrong because his remuneration is decided by President of India. President of India decide and he hold office during the pleasure of President. President can remove him anytime and the Attorney General is assisted by a Solicitor General and Attorney General counterpart in our state is Advocate General. So same Advocate General also appointed by the Governor. So no assistant of Advocate General. So this is the question 1, 2 and 3 are correct. So same explanation. Acha explanation tome पढ़ी दो पहला तमे you will get explanation of every question in Telegram channel. You go through it. एबे खाली हमें चेनाब रेल ब्रिज. तो चेनाब रेल ब्रिज इज करेक्ट. ये क्वेश्चंस बहुत सारा न्यूज रे थिला वायरल भी होइतिला तो सेति पई ये क्वेश्चंस पचराई करंट अफेयर्स बेस. इट इज अ केबल स्टेड ब्रिज. The Chenab rail bridge is taller than the Eiffel Tower. It is a part of Golden Quadrilateral Railway project and it is the world highest railway arc big bridge. Arc माने ये भलिया. Okay, arc bridge. Correct answer. यहाँ पर करेक्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चंस था. So correct answer है ला. So basically cable styled na this is wrong. The Chenab bridge is taller than Eiffel Tower. This is right. It is world highest rail bridge. Yes. Not golden quadrilateral rail project केमती हैला. So 2 and 4 D is the correct answer. So ये not cable style, it is arc bridge and सही option आपण eliminate करी परिबे. Chenab rail bridge stand 359 meters जोंटा कि above the river bed. Eiffel Tower 330 meters. Therefore जोंटा कि indeed taller than Eiffel Tower and rail bridge part of Udhampur Srinagar Baramulla rail link not कि golden quadrilateral फसिया पई देइची बडो ना दे देइची. जोंटा कि this is regarding Indian constitution schedules of the Indian constitution. Seventh schedule division of power between union and state. So correct पचारिछि. एटा बहुत ही इजी क्वेश्चंस डायरेक्टली आपण करि परिबे. B is the correct answer. 6th schedule 7th schedule देखि दियंतु कोन कोन अछि यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट या ऊपर करि परिबे. IUCN classification is not directly recognized in Indian Wildlife Protection Act 1972. IUCN classification. So IUCN classification है endemic. Basically not directly recognized Indian Wildlife Protection Act रे endemic को recognize कराई नहीं. So C is the correct answer. Indian Wildlife Protection 1972 categorize species based on their conservation status, but it does not directly recognize the term endemic as a classification. So से अनुसार आपण ए आंसर पाई जिवे explanation. Salicylic acid is known as oil of wintergreen. Aspirin is the correct answer. ये factual questions तो आपण चाहिले करि परिबे तुक्का मारिथिबे प्राय मु जानि छि एस्प्रिन ही मारिथिबे. एस्प्रिन नाटा समस्त सुनिथिबे. So ये सब थिबो. Then match the ये ओडिशा हमर ये रे मधुसूदन दास of खोर्धा रिबेलियन. बक्सी जगबंधु फकीर मोहन सेनापति कृष्णचंद्र गजपति. ये भी आपण क्वेश्चन समस्ते गोटे गोटे लाइक शेयर कर. समस्ते तुम सांग साथी सहित समस्ते गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर. मोस्ट एक्यूरेट आंसर पाइबो
I guarantee you तुम्हें decide करि परियो by the end of this classes तुम्हें cut off केते जाउची we will discuss regarding the cut off and तुम्हें डिस्कस करि परिबो तुम्हें डिसाइड करि परियो कि मेंस लेखुच ना नाही ना आउथरे मते प्रिपेयर करियो पड़िबो व्हाट टू डू नेक्स्ट देन यू विल गेट टू नो सो बेसिकली मधुसूदन दास लीडर ऑफ एटा एटू पळि आसी लीडर ऑफ खोर्धा रिबेलियन यारे अंडर रहिबो बक्सी जगबंधु मधुसूदन दास नथिले बक्सी मधुसूदन दास बेसिकली फाउंडर ऑफ उत्कल सम्मेलनी लीडर ऑफ खोर्धा रिबेलियन रे किए थिले बक्सी जगबंधु B1 देन फकीरमोहन सेनापति लिटरेचर रे पायनर थिले एंड कि ओडिशा सेपरेशन ऑफ प्रोविंस कुशल चंद्र गजपति थिले तो सही अनुसार आपण देखि दियंतु कोन ऑप्शन हबो इजी क्वेश्चंस अछि मो ओडिशा मॉडर्न हिस्ट्री एतले पढाइची मो तुमु कहिची ये डायरेक्टली मोर क्लासेस रु ही आसीची नॉट ए सिंगल जिंस जोडे कि मु कहिनी सेमिति किछि नाही सब जिंस कोहाइची डायरेक्टली क्वेश्चंस आसी आपण देखि देबे देन what does NISAR एटा एबे करंट अफेयर्स NASA and ISRO भितरे तुमरो ये हितला चुक्ति सो करेक्ट आंसर जी NASA ISRO सिंथेटिक अपर्चर राडार NISAR ये B is the correct answer so NISAR stand for NASA ISRO synthetic radar it is a joint earth observation mission between NASA and the Indian Space Research Organization ISRO भितर होता है आपण मैंने देखी थे रिसेंटली न्यूज रा ना नहीं समस्ते कमेंट माध्यम जना पिला माने केमिति कोन तुमको एग्जाम लागिला क्वेश्चंस केमिति लागिला डिफिकल्ट लागिला कि मॉडरेट लागिला कि इजी लागिला कि बहुत ही हाई डिफिकल्ट लेवल अछि सो कुह देले आमे तुमको ये करबा वर्तमान इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर सर्विस Yeah, the next question is consider the contributions and challenges of the service sector in India. The services sector is the largest contributor to India's GDP. This is quite right. This is right because the service sector is the largest contribution to India's GDP. That is and has been the primary driver of economic growth in recent decades. So, what is the contribution of service sector to India's GDP? It is near about 55 to 60%. Okay, 55 to 60% is the contribution of service sector to India's GDP, and yes, it has been the service sector has been the primary driver of economic growth in recent decades. The first statement is correct statement. Second statement, despite its large share in GDP, the services sector's share in total employment is significantly lower than that of agriculture. देखो केते एक्चुअली मते किछि स्टूडेंट्स कहले जे सर एटी जेतु सिग्निफिकेंटली लेखा हिची तो टिके एक्सट्रीम ही जाउची बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन द स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन एंड द स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हाई बिकॉज सी द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इज near about 30%, whereas the share of agriculture in employment is near about 45%, 40 to 45%. That means yes, the service sector share in total employment is significantly lower than that of agriculture. 45 koti 30 koti बुझ परले. So I feel that it is significantly lower. So I consider the statement to be right. And the third statement is the growth in services has often been termed jobless growth. The growth in services has often been termed jobless growth in the formal sector, leading to a rise in the informal service sector's employment. Again, this statement is also correct. Third statement. And fourth statement, digitalization and the rise of information technology and information technology enabled services sector have further solidified India's position as a global service hub, but the benefits are not uniformly distributed across the workforce. Again, correct statement. So, the correct option is D, all of the above. So, let's see the explanation. See, the service sector contributes around 55 to 60% of India's GDP. Sectors like IT, telecommunications, banking have been a major growth driver since the 1990s. Agriculture still employs, see here, 40 to 45% of India's workforce, whereas the formal service sector employs a smaller fraction, leading to a smaller fraction means it's take it as 25 to 30%, which is significantly lower than that of agriculture, leading to sectoral employment imbalance. So many service sector jobs, especially in IT and ITES, are skill intensive and capital intensive, creating limited employment opportunities in the formal sector. And this is upon explanation part of the way. The answer is option D. Okay. The next question.
ये क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसर्शन रीजन इथर पकई छी एसर्शन रीजन केते केते पकई दोची एसर्शन रीजन मोर वॉइस क्लियर जाउची तो समझते अरे हाउ इज द जोश केमती अच्छा एग्जाम दे आसी छ मु जानि छी थकी जाइथियो सीसैट भी क्वेश्चंस आसी सालानी माने ताकू भी टेकी देकी आस्थियो तो माने थकी जाइथियो आमे तुम पई एनालिसिस करूथुलु कि केमती कोन क्वेश्चंस आसी केते एक्यूरेटली आमे आपण पई नेई आसीबु सेई ता पई चेष्टा करूथुलु एवं सेइथि पई आमे प्रिलिम्स पूर्व चेष्टा करथिलु बहुत क्लासेस देइथिलु पिला बहुत ही बेनिफिट हेचंती ये एग्जाम देकी हमर क्लासेस करिकी सो आगो को आमे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम आनुछु आपण सेइथिरे समस्ते कांटेक्ट करिवे केवं जॉइन करिवे मात्र बहुत पिला रहिबे नाही केवल 30 टा पिला ऑफलाइन रहिबे एवं बहुत ही कम प्राइस रे आपण पाइबे इवन लेस देन 5000 आपण पाइ परिबे सो डू जॉइन एवं this is the questions of a central and southern Odisha the Petrozoic era. The Petrozoic era is represented by the Eastern Ghat granulite belt, which consists of condolites, condonite, charnocite, magnetite, and जोंटा कि anorthosic and alkaline rocks. Reason these rock formation are linked to the mineralization of bauxite, manganese, graphite, and gemstone. So option दुईटा को ठीक अच्छी एवं both ये अच्छी A is the correct answer. Normally ये question से एटा थाए आंसर थाए. So the Proterozoic era रे सेंट्रल एंड साउदर्न ओडिशा रे ईस्टर्न घाट रे ग्रानुलर बेल्ट को आ जाए जोंटा कि रॉक टाइप थाए कंडोलाइट हो चार्नोकाइट हो देन मीमाटाइट हो एंड एनॉर्थोसाइट हो ये फॉर्मेशन हुए सिग्निफिकेंट मिनरल डिपोजिट हुए इंक्लूडिंग बॉक्साइट मैंगनीज से आम मैंगनीज रे नंबर 1 अच्छू बॉक्साइट रे भी नंबर 1 अच्छू ग्राफाइट रे भी बहुत भल आम करूँ सो ये सब एक्सप्लेनेशन देखीदे देन दिस इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चन एमसी राजा ऑर्गेनाइजेशन जगजीवन राम बी आर आंबेडकर एंड महात्मा गांधी सो ये जानी पारे समस्त जानिच मते कहलो आंसर कहलो समस्त आंसर कहलो अरे समस्त पार्टिसिपेट करो अरे पार्टिसिपेट कले सिना मजा आसीबो पार्टिसिपेट करो देखो एमसी राजा जी की ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग रे थिले जगजीवन राम तुमरो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन थिले बी आर देखो आ गुटे कथा हला ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस रो पाइबो तुमरो देखो टिके खाली खेली छि गेम बी आर आंबेडकर ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस रे थिले तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास समस्त अच्छन देन महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन एटा जानथिबो 4 D4 देखो D4 दीटार अच्छी सो D4 है देन तुमरो C2 दीटा जाकर अच्छी तो ये दीटा हेल देन एटू तुम कन्फ्यूजन हम दियो डबल ऑप्शन वाला तुम C विल बी द करेक्ट आंसर सो से अनुसार आंसर तुम पाइज एमसी राजा ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन देन मुलाई चंद राजा एमसी राजा जे कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन फॉर वर्क अपलिफ्ट ऑन दलित जगजीवन ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस and Jagjeevana was associated all India depressed classes Congress advocating social and political rights of the depressed classes and B.R. Ambedkar all India depressed classes league sorry आमे कौन कले कि टिके देखि दो टिके मु कोन भूल कहि देली कि लीग यस ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग माने तुमर B.R. आंबेडकर हेबे B.R. आंबेडकर AC1 बेसिकली ये 4 हम सो ये टिके तुम देखियो जदि C हम आंसर A3 B2 C1 D4 C1 एटा देइनी C1 एक्चुअली टिके गड़बड़ देइछि ऑप्शन रे C1 हम काहे ना B.R. आंबेडकर एठी अछथि सो दिस इज तुमे आंसर एटा को C भाबी पारिबो जदि एई भले तो एठी ऑप्शन से अनुसार देइनी एटा 1 देइछि एमसी राजा एटा तुम देखि आंसर देखिबो एटा 3 हबो तुमे देखो एटा 3 माने ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन हबो टिके एथर भूल अछि 3 1 सो एक्चुअली आंसर बसुनी एटा को हमें स्टार दे देबा गंजाम प्लेट्स ऑफ माधव राजा सो एक्चुअली देखो एटा सिलेबस नाही तुमरो सिलेबस नाही काना सळेद भाबा डायनास्टी या राइज ऑफ लोकल डायनास्टी कथा किछि कहिनी
बट एटा माधव राजा 2 ऑफ शैलभावा डायनेस्टी प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली मेडिएवल ओडिशा हिस्ट्री. तो ये इनफॉरमेशन देइनी या ऊपर सिलेबस नहीं स्टिल देन ये क्वेश्चंस पचारिबार माने कोन. तो ये जानिया दरकार. सो करेक्ट आंसर द जेनेलॉजी ऑफ टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ शैलभावा रूलर तार जेनेलॉजी क्रोनोलॉजी जानिया पई ये हेल्प करथिला. गंजाम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था माधव राजा 2. एक्सप्लेनेशन देखि देबे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एशिया कप. देखो एशिया कप ऊपर क्वेश्चन आमे सिविल सर्विस रे करिवा. एशिया कप रे कोन एटा ठीक ओपीएससी मानिया पड़ियो. किसी भी क्वेश्चंस करूची क्वेश्चंस करिवार अछि ताकू तार कामला क्वेश्चंस करिवो. सो जो बळिया क्वेश्चंस हेले भी से करी की छाड़िवो. सो जो देखिबा नॉट करेक्ट पचारची. Not correct on the Asia Cup cricket tournament played among the Asian group nation. The Asia Cup organized by the Asian Cricket Council. Asia Cup was first held in year 1842. Asia Cup was cricket tournament was played in Colombo, Sri Lanka. No, first, so this is wrong and এটা কেই করি পারিব নথিও মু জানিছি. Not correct পচারছি. This is not correct. So 4 is the right answer. 4 is the right answer. So this is subdivision of Himalaya characteristic. Trans Himalaya known for hill station like Simla, Mussoorie. Greater Himalaya compose the unconsolidated sediments forming foothills. Lesser Himalaya includes Karakoram, Ladakh and Jaskar range, and Shivalik contain Mount Everest and Kanchenjunga. So ये option आपण देखंतु. Correct answer is option D. आपण चेक कर देबे explanation. Option D A3 जोड़े कि काराकोरम रेंज एंड ट्रांस हिमालय पूर्व थिला. देन बी जोड़े कि ग्रेटर हिमालय कंटेन माउंटेन एंड एवरेस्ट. ग्रेटर हिमालय थिला. देन लेसर हिमालय बेसिकली हिल स्टेशन वगैरह पाइबो. एवं शिवालिक रे पाखापाखि तुमरो सेडिमेंट्स पाइबो. सो दीज आर एक्सप्लेनेशन. यू कैन सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा. सर राज्यसभा स्टेटमेंट एटा क्वेश्चंस टा बहुत अलग टाइप रो देकी भलो अछि. क्वेश्चंस टा Following statement are correct about Rajya Sabha. It is a permanent body and cannot be dissolved. Yes, Rajya Sabha cannot be dissolved. It is a permanent body. 1/3 of its member retired every 2 years. It is a permanent body, so 1/3 member retired every 2 years. And members are elected from state legislative assembly, proportional representation, single transferable vote. Vice President of India is the ex officio chairperson of the Rajya Sabha. Yes, and it can be, देखो question number 4, it can be dissolved by president during national emergency, which is wrong. It cannot be dissolved by president during national emergency. President can only suspend parliament. So option which of the correct? Option 1, 2 and 3 both are correct. Yes, it is simple. Battle of तालीकोटा. ये भी हिस्ट्री ऑफ पार्ट. सो बैटल ऑफ तालीकोटा एते स्ट्रेट फॉरवर्ड पचारे कथा. सो ये द आइकन स्टिंग कोन पचारथले 3241 को क्वेश्चंस कथा कहउथलो कहलो. 3241 तुम्हारा एटा क्वेश्चंस ना एई कथा कहउथलो या कथा जोंडे कि 3241 एटा टिके भूल अछि. माने ऑप्शन दबार भूल अछि. सेति में मु स्टार दे देली जदी एटा होइतबो. नेक्स्ट हो फोर्ट बैटल ऑफ तालीकोटा रामराया. सो बैटल ऑफ तालीकोटा जे देखिबा called Battle of Rakasagi or Talikota was fought in 1565. Basically, Battle of Talikota was end of basically Vijayanagar Empire, between Vijayanagar Empire and Deccan Sultan Bijapur, Kolkata, Ahmedabad, and Bidar. Ramaraya, the de facto ruler of Vijayanagar at that time, led the empire during the battle. So battle resulted in catastrophic defeat है विजयनगर से टू एंड आइथले. तो एटा सेति में ये बहुत बड़ थले. जो ऑप्शन देछि देखो हरिहर देछि प्रथम ना सुनला वाला लागुची बट हरिहर हेला फाउंडर थिला. रामराया समय डिक्लाइन होता. तो तालीकोटा समय डिक्लाइन होता बैटल ऑफ तालीकोटा. तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA.
So देखो NDMA National Disaster Management Authority, it was established in 2005 under National Disaster Management Act. So NDMA, we have central level रे National Disaster Management Authority chairman is the Prime Minister. So एठी confusion ही पारे तमरो कि NDMA chairman Prime Minister, State Disaster Management Authority chairman is the Chief Minister, but question पचारिछि it is function under Ministry of Home Affairs. This will be the correct answer. सेटा गोटे confusion ही पारे कि बहुत पिला भाबुथिबे कि it might be PMO as Prime Minister is the chairman of NDMA. ए confusion टा ही पारे, but it is under Ministry of Home Affairs. Explanation पढ़े दो तमे. ये बेसिकली एनवायरमेंटल क्वेश्चंस एनवायरमेंटल कैरेक्टर जोंटा कि OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन जोंटा कि सेक्रेड ग्रुप्स एंड एंडेमिक फोना तापाई फर्स्ट टाइम एमती कराइतला जोंटा कि अवार्ड भी मध्य दिया होतला. सो आरावली बायोडायवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम कोन जानिछ गुरुग्राम हैला हरियाणा was declared India's first OECM site and recognized to give its role in conserving sacred groups and endemic flora and fauna they contain. Then WHO is commissioned the construction of rock cut Jaina monastery on Udaygiri. या टू इजी क्वेश्चन किसी नहीं खारवड़ा is the correct answer. Udaygiri and Khandagiri caves near Bhubaneswar. रॉक कट के एसोसिएट जैना मंक्स एंड जैना मंक्स पाई से काटिथिले काटिकी पहाड़टा काटिकी केव बनैथिले खारबेल एवं खारबेल रंकर जोंटा कि बहुत सारा तांकर 13 वर्ष शासन काल पर्यंत से ये करथिले तांकर हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन एटू पाइबो एंड बिकॉज ऑफ हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन हम सही समय एते बड़ रूलर थिले बोली हम जानि परले. ओके, so which of the following statement about tropical evergreen forest in India is not correct? So question is asking about not correct. So correct katha pacharini, not correct katha pacharichi. So they are confined only to Eastern Ghat. Seta sarlau tropical evergreen only pachar dechi. So this is not correct. The tree shed their leaves simultaneously during dry and summer. By ye deciduous कथा कहनी ये एवरग्रीन कथा कहूँ एवरग्रीन फॉरेस्ट केबे भी पत्र झड़ा दिएनी. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. They are found in the region receiving rainfall above 200 centimeter. This is right. Ebony, mahogany and rosewood are the common species. This is right. So 1 and 2 ये है incorrect statement दीटा देखो. So सही आंसर है B. Okay. What is the Surya Heliophysics Foundation model? Surya Heliophysics Foundation model is an AI model of forecast solar activity. AI model to forecast solar activity. Surya Heliophysics Foundation model is an artificial intelligence model developed by NASA in collaboration with IBM and other research institutions. It designed to analyze and predict solar activity such as solar flare, coronal mass ejection, which can impact space weather and affect satellite operation, communication system and power grid on the earth. Arrange the following institution established by Raja Rammohn Roy in देखा बहुत बढ़िया क्वेश्चन. जदि क्रोनोलॉजी जदि बुझीथिबो ठीक से क्रोनोलॉजी जदि भल से बुझीथिबो ताले ये क्वेश्चन से तुम ठीक माने ये हबनी. सो देखो मु जतरे कहितली प्रथम राजा रामन कथा पढा थाए मु आत्मीय सभा कथा कहू थाए. सो आत्मीय सभा को जदि प्रथम भाबी देबो सी ता माने एठू तुमर आंसर बाहरी गला. बी इज द करेक्ट आंसर. राजा रामन राय 1815 रे से प्रथम आत्मीय सभा करथिले जोंडा कि among the friends religion and philosophical society in Bengal, promoting monotheism and ethical living, and ethical living. Then Unitarian Committee 1823 रे Bengal ले करथे तो patronage Unitarian idea and reform Hinduism. Vedanta College 1826 founded to provide modern and religious education of Western and Indian knowledge को मिसई की. And Brahma Samaj 1828 reformist religious movement aiming to eradicate social evils like sati, caste, discrimination and idolatry. So very important. Consider the following concern with multi-dimensional property index. Very good questions. See, question. It have got a general knowledge question. जोटा कि question is consider the following statements
concerning India's multi-dimensional poverty index. किछि एथरे बुझिबा को भी नहीं, पूरा completely general knowledge question. Okay, see the first option is India's multi-dimensional poverty index uses health, education and standard of living as dimensions aligning with the global MPI methodology. Yes, it's a correct statement. Human development index को measure करिवा पाई measure करिवा को आमे ए तीनटा डायमेंशंस नहीं कि मेजर करू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सच एज हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुनः हेल्थ एंड एजुकेशन रो सब डायमेंशंस गुडा को भी अच्छी सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर करिवा को भी वी एक्चुअली टेक दीज थ्री डायमेंशंस हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओके व्हिच एक्चुअली अलाइंस विद द ग्लोबल एमपीआई मेथोडोलॉजी. The first option is correct. The second option is the MPI is published by Niti Aayog. Correct statement. Using data primarily from the National Family Health Survey. National Family Health Survey. Just a minute. National Family Health Survey. Okay. When it are using data primarily from the National Family Health Survey, again correct. MPI को publish किए करे नीति आयोग और को डेटा को यूज करी करे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा को यूज करी पब्लिश करे नीति आयोग. And the third statement is the global MPI is released annually by the United Nations Development Program UNDP and the Oxford Poverty and Human Development Initiative. Again correct statement. General knowledge. Fourth statement is India's MPI includes indicators such as nutrition, school attendance and access to clean water and so on. Yes, the fourth statement is also correct. जो तीन dimensions अच्छी health, education and standard of living यार पुणी सब डायमेंशंस अच्छी बुझ पारे एंड दिस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्लीन कुकिंग फ्यूल एंड न्यूट्रिशन स्कूल अटेंडेंस ऑल दीज आर सब डायमेंशंस ऑफ these three important dimensions. So fourth option is also correct. So the correct option is D, all of the above. So here is your explanation. All four statements regarding India's multidimensional poverty index are correct. Statement 1, it is based on global MPI methodology which measures acute multidimensional poverty across three dimensions: health, education and standard of living. Statement 2, janithive general knowledge. Statement 3, the global MPI is a key international resource that is released annually by the United Nations Development Program and the Oxford Poverty OPHI. And statement 4, India's MPI includes 12 indicators, 12 sub-dimensions across the three dimensions such as nutrition, school attendance and access to clean drinking fuel. Thank you. Next question. One Health approach. One Health approach is a public policy referred to integrating traditional and modern health system, linking human, animal and environment health, prevent pandemics, making public and private hospital work jointly, and telemedicine expansion to rural area. So this is One Health like human, animal and environment health to prevent pandemics. So एटा तार explanation you will came to know. So telegram रे आपण पाई जिवे OAS Hub official telegram रे you will get the text PDF पाई जिवे. Which of the following statement about Odisha integrated irrigation project for climate resilient agriculture? Questions तो एते केही पढी नथिबो पुणी ये नॉट करेक्ट पचारची तो एटा आंसर दबाटा डिफिकल्ट बट आमे आंसरटा कहि देबो आपन को आपण जदि करिथिबे ठीक अछि मते मेजॉरिटी पिला छाडिथिबे. सो 3 ओनली एटा प्राइमरली फोकस ऑन लार्ज स्केल डैम एंड कंस्ट्रक्शन इंक्रीज इरिगेशन एटा इज नॉट करेक्ट. देन jointly funded by government of Odisha and World Bank, that is true. Project aim to improve irrigation and infrastructure and promote climate resilient farming practice in selected district. The project support farmer training, capacity building and introduction of climate smart agriculture technology. So तीनटा को ठीक अछि बट 3टा भूल अछि. Who is the author of book वैदेशिष विलास? उपेंद्र भंज. सो ये तांगर ऑथर थिले उपेंद्र वैदेशिष विलास. Famous epic poem in Odia literature was authored by Upendra Bhanja, one of the most celebrated poet of classical Odia literature. The poem is known for its rich poetic style, ornate language and narrative on the love story of Sita and Rama.
सीता हला वैदेशिक एंड राम हरिचंद्र देव एंड शिशु शंकर एंड हरिकवि ये भी मध्य प्रोमिनेंट थिले सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर इन इंडिया नॉट करेक्ट देखो नॉट करेक्ट क्वेश्चन एथरा बहुत देछि पिला जदी देखि नथिबो सिली मिस्टेक हेइ जिवो देले प्रॉब्लम हबो क्वेश्चंस पचाछि नॉट करेक्ट ग्रेट निकोबर इज वन ऑफ द डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व यस एटा न्यूज रे थिला ये ट्रू स्टेटमेंट देन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर कर्नाटक केरला एंड तमिलनाडु this is also correct there is no biosphere reserve in the Himalayan region अरे एमदी केमती हबो so not correct and Sundarban biosphere reserve is a UNESCO world heritage site that is true but questions पचारछि not correct so answer will be A only then एटा डिटेल्स कहि देली आपण माने देखि देबे then mission कर्म योगी launched by government of India mission कर्म योगी so basically at a development of unemployed youth for skill development so it actually A option एठु हबो actually एठी लेखा हिची एठु स्टार्ट हबो skill development unemployed youth and capacity building competency developed for civil servant leadership training and panchayati raj official military training for disaster response military training for so correct answer is B capacity building जोंडे की competency development for civil servant so ये मिशन कर्म ये भी न्यूज रे थिला so आपण माने आगो को कट ऑफ विषय भी जानिबे एठू आमे लास्ट आमे डिस्कशन करे आमे सर माने अछन आमे जी जरा आईडिया अनुसार आमे गोटे बाहर करिछु कि केते कट ऑफ जाई पारे सेटा आमे डिस्कशन करिबा जोंडे कि आउ किछि क्वेश्चंस पर मात्र 20 टा क्वेश्चंस अछि आपनकर सरी जीवो देन ये क्वेश्चन हला थ्रेटेन्ड स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम थ्रेटेन्ड एटा भी क्वेश्चन सा इजी नाही डिफिकल्ट अछि थ्रेटेन्ड स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम बाय एनबीएपी टारगेट स्पीशीज दैट एट species with narrow geographical range and declining population so C is the correct the threatened species recovery program TSRB is implemented by India under national biodiversity action plan it is focused on species that are highly vulnerable that is those with narrow geographical distribution small or declining population high risk of extinction जोंडे की ये सब हमर अछि देन नेक्स्ट हला व्हिच मुगल एम्पायर ये हिस्ट्री आज पाखापाखि 20 रु 22 टा क्वेश्चन हिस्ट्री पड़ी छी जे हिस्ट्री छाड़ी जाइथिबो ये हिस्ट्री हे जीवो तांगा पई तो छाड़ी की किछि जाउनी किछि भावंती सर मते डिफिकल्ट लागु छै छाड़ दी पड़ेबू किछि भावंती इकोनॉमी डिफिकल्ट लागु छी किछि भावंती ज्योग्राफी डिफिकल्ट लागु छाड़ दी पड़ेबू छाड़ की छाड़ी की किछि जाई परिबोनी एग्जाम रे जे जनरल साइंस भी डिफिकल्ट भाव की छाड़ देथिबो सी भी फसथिबो so which mughal emperor appointed first separate subadar of subadar माने कोन बेसिकली शुभरु सुबदार शुभर हेड को सुबदार कुआ जाय शुभ मींस प्रोविंसेस स्टेट सो ये के करथिले अकबर करथिले सेपरेट शुभर हेड हला सुबदार Odisha became part of the Mughal empire in 1593 after it was conquered by Raja Man Singh a Mughal man sabdar under the emperor Akbar and ता परे Akbar basically शुभ appoint कले administration match the following host G7 NATO SCO G20 ये सब ऑर्गेनाइजेशन अछि कोंटी तांकर लोकेशन कोंटी कोनी अछि ये सब जानि थिबो इजी अछि तमे सांघाई कॉर्पोरेशन तो आराम से कर दे परिबो सांघाई कॉर्पोरेशन सो कोन लोकेशन अछि बेसिकली कोन लोकेशन अछि ये सब नाटो हेग एससीओ इस्लामाबाद G20 समिट 2025 जोहान्सबर्ग सो बेसिकली कोन ये क्वेश्चन ता बुझिबा भी टिके डिफिकल्ट बेसिकली ता हेडक्वार्टर कथा पचारछि ना कोंटी हेइथिला पचारछि सेटा भी पचारिनी ठीक से बुझियला नै सेहि पई हमें भाबुचे कि न्यूज जहा देछि आउ ए इज द करेक्ट आंसर जोंटे कि समिट हेइथिला जोंटे 2025 रे हेइथिला बोली से कहिनी बट हां G20 2025 कथा लिखि देछि बट कोंटी हेइथिला कहिनी बट जहाँ भी बुझिबा से अनुसार आंसर मारिबो एटू खाली बुझा पड़ुची G20 से 2025 जोहान्सबर्ग हेइथिला तो से अनुसार आंसर देखि देबो एल फेनोमेना एटा बहुत ही इजी क्वेश्चंस ज्योग्राफी रो वीकेनिंग द मानसून इन इंडिया एल नीनो हले मानसून वीकेन हुए एई वर्ष हमरो एभव नॉर्मल मानसून हेछि एभव नॉर्मल मानसून माने आपनकर लानिना फेज लानिना रे ओवर एभव नॉर्मल मानसून है एल नीनो रे बिलो नॉर्मल मानसून हुए तो वीकेनिंग ऑफ मानसून इन इंडिया एल नीनो कथा पचारि एठी दिस इज
एल क्लाइमेट फेनोमेना जानिदेव व्हिच कंट्री डिड इंडिया डिफीट इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स खो खो वर्ल्ड कप 2025 नेपाल को इंडिया हरैथिला एटा फैक्चुअल क्वेश्चंस देन ये क्वेश्चंस है ऑथर्स एंड बुक्स दिस इज बी आल्सो प्योरली factual questions so correct answer is a 1b 2a c d and this is देखि दबा एटा को एटा किछि नाही इथरे 15th finance commission recommended a health grant architecture focusing on a health grant architecture architecture जोटा कि urban and rural health infrastructure and primary health strengthening care. Okay, D 15 finance को recommended health grant architecture focusing on माने कौन क्वेश्चंस पचारची 15 फाइनेंस कमिशन डायरेक्ट पचारनी सो 15 फाइनेंस कमिशन जोटा कि 2021 रु 26 भितरे एबे चलची 15 किए कोइ परिबो 15 फाइनेंस कमिशन चेयरमैन किए काहा को अपॉइंट कराइतला 15 फाइनेंस कमिशन ऑल ऑफ यू नेक्स्ट चूला नेवी वाज नोन एज मु क्वेश्चंस पढ़ेला बेले पूरा मैप करी कि मु देखे देइथिली इंडोनेशिया एंड श्रीलंका नोन फॉर एक्सपीडिशन अगेंस्ट यांको अगेंस्ट जाउथंती यांको कब्जा भी करथिले एरिया चूला डायनेस्टी 13th चूला द ग्रेट चूला पावरफुल नेवी थाई तांकर ये जाई कि लड़ाई करथंती समस्ते श्रीलंका मल्टीपल थाई श्रीलंका जोंटे कि मॉडर्न डे इंडोनेशिया सुमात्रा पार्ट ऑफ मलेशिया ये सब मध्य करूथंती पीएम गति शक्ति बेसिकली नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी टारगेट पीएम गति इंटीग्रेट गति शक्ति माने कोन केमिति ट्रांसपोर्टेशन को भलो करि हबो सो एटा इंटीग्रेटेड रोड रेल पोर्ट एंड एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फास्टर गुड मूवमेंट्स गुड्स को केमिति फास्टर मूवमेंट करिवा देन काना से अनुसार इकोनॉमी चले गुड्स अकॉर्डिंगली पीएम गति शक्ति सो ये दिस इज वेरी इंपोर्टेंट तुम देखो व्हाट डिफरेंशिएट India's long-term low emission development strategy LT-LED from NAPCC. It target only renewable energy, long-term development basically. So correct answer is it provides sector-specific decarbonization roadmap. So ये LT-LED difficult questions ये difficult category जीवो मु कहि भी केते difficult questions पचरची केते कट ऑफ जाई पारे गोटे रीजन बेस्ड गोटे आमे आइडिया दबा पाखापाखि से ये रे जीव आपनकर देन मास्टर गैस इज ए यूरानियम हेक्साफ्लोराइड डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइक्लोएथिल 2 डाइक्लोरो डाइफिनाइल सल्फाइड सो सी इज द करेक्ट आंसर एटा करि परथिवो छाडी देबथिवो केही करनथिवो जे बहुत ज्ञानी थिवो से करिथिवो नले चांसेस कम करिवार ओके geography respect of settlement geography of the world so statement in humid tropical region rural settlement often take the form of compact villages so statement 2 isolated farmstead are more common in densely populated rice growing region of Asia physical barrier like mountains and desert can lead to clustered settlement in limited habitable pockets settlement morphology is linked to agricultural system and land ownership pattern. So which of the following are correct? Which of the following basically option it get questions of tough अछि difficulty level लो जीवो but correct answer मु कहि दोची B is the correct answer. B is the statement 1 3 and 4 are correct. 1 कोन ना जो humid tropical region rural settlement often take the form of compact village. Yes. Then ये geography optional questions but NCERT रो questions एटा then third statement भी true अछि physical barrier like mountain and desert can lead to cluster settlement हुए and fourth हला कोन ना morphology like link to agriculture system and land ownership pattern then 2 हला कोन wrong अछि isolated farmland basically are more common in the densely populated rice growing region of Asia so B 2 is the wrong answer B is the correct answer. The basic foundation of global economy governance in the post-Second World War was led by various institutional framework. Which of the following combination is correct? Which of the following combination is correct?
Well, the basic foundation of global economic governance in the post Second World War was laid by various institutional frameworks. Which of the following combinations is correct? See, we have IMF, World Bank, and GATT. This IMF stands for International Monetary Fund, and GATT stands for General Agreement on Tariffs and Trade. Option B, IMF, World Bank, Asian Development Bank. C is your World Bank, GATT, BRICS. C is wrong option. D is also wrong option. Okay. And IMF, World Bank, and GATT. Yes, this is the correct option. This is completely true. This is fully true. That the basic foundation of global economic governance in the post Second World War was laid by IMF, World Bank, and GATT. Okay, IMF was established for the purpose of maintaining stability in the international financial system, and also to provide loans to those countries who are actually facing from BOP crisis. World Bank was established to provide loans to those countries. So for the purpose, actually, World Bank was established for the purpose of to provide loans for the purpose of growth and development, whereas GATT was established to promote trade amongst countries across the world. And B is also correct option. Why? Because IMF, World Bank, Asian Development Bank was established in 1966, which was just an extension of this global economic governance. This was just an extension of this global economic governance. So option B is partially correct, whereas option A is fully correct. So if you look at the options A, B, and C, D, option A and B, they both are correct. Okay. So option A and B are both are correct because IMF, World Bank, and GATT were their basic foundation of global economic governance, whereas IMF, World Bank, and Asian Development Bank was established as an extension to this global extension of this global economic governance. Thank you. So our correct option is A. With respect to this inflation in the Indian context, consider the following statements. Like, for example, option 1 is retail inflation measured by consumer price index is the primary metric used by the RBI for monetary policy formulation. देखो इंडिया रे आमे एक्चुअली रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करिकी ही एक्चुअली रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करा जाए थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ओके, इंडिया रे इन्फ्लेशन को दीटा लेवल रे मेजर करा जाए. गोटे होची रिटेल लेवल रे आ गोटे होची होलसेल लेवल रे. रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करा जाए थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल इन्फ्लेशन को मेजर करा जाए थ्रू होलसेल प्राइस इंडेक्स. इन इंडिया we use consumer price index as the headline measure of inflation. So since CPI is the headline measure of inflation, RBI uses CPI as a metric for monetary policy formulation. So the option 1 is correct. Second option is core inflation includes volatile components like food and fuel prices. Wrong statement. Core inflation actually excludes, it doesn't include, core inflation excludes volatile components like food and fuel prices, providing a more stable measure of underlying inflationary pressures. So core inflation doesn't include volatile components like food and fuel prices. Okay, except for food and fuel, the core inflation includes all other items. Third option is supply side factors such as monsoons affecting agricultural output and global crude oil prices play a significant role in India's inflation dynamics. Yes, correct statement. Fourth, headline inflation refers to total inflation in an economy including volatile components such as food and energy prices. हेडलाइन इन्फ्लेशन को दैट मीन्स सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर कला बेलू को आम वोलाटाइल कंपोनेंट्स को भी ऐड करूँ, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स को भी ऐड करके आम सीपीआई को मेजर करूँ. सो द फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1, 3 and 4. द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज बी. सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. देखो एक्सप्लेनेशन अच्छी ये मुझे आपको बुझे देली. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. आप प्लीज गो थ्रू इट. गोटे कमिटी जोटा कि यहाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज एमरजेंसी होता 1975 रे जोटा कि इंदिरा गांधी समय. सो एमरजेंसी समय ये जो होता से गोटे कमिटी बनई बेसिकली
अंडर द गाइडेंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी एवं तांकर रेकमेंडेशन अनुसार फंडामेंटल ड्यूटीज को एनाक्ट कराई था एवं सिक्स रे सो ये समय नीड फॉर एम्पायर सिटीजन रेस्पॉन्सिबिलिटी से अनुसार कमिटी बनागला 1976 रे सरदार शरण सिंह कमिटी से जने कांग्रेस लीडर थिले देन 42nd अमेंडमेंट रे ताको इंक्लूड करागला ओके एवं गुटे सेपरेट पार्ट करागला पार्ट 4A बहुत इजी अछि एटा तुमको वेव लाइक कैरेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन scattered from a crystalline solid sound clear nahi now clear guys I hope मझे मझे टिके केमती तार एडसड हे जाउथबो ओके देन सरोजिनी नायडू लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट उषा मेहता अरुणा असफ अली डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन लक्ष्मी स्वामीनाथन तुम जानी जमी आजाद हिंद फौज रे जॉइन करथिले लक्ष्मी जोने कि तांको ना रे गोटे ये हेतिला देन सीक्रेट रेडियो उषा मेहता अरुणा असफ अली जोटे कि लीड द सॉल्ट मूवमेंट जोने कि सरोजिनी नायडू सॉल्ट मूवमेंट और अरुणा असफ अली लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट ये भी क्वेश्चन इजी अच्छी से अनुसार आप मैच कर दिंतु कौटा हूँ करेक्ट आंसर इज बी करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर ओके क्लियर गाइज सो बी इज द करेक्ट आंसर आपण माने जानी परिवे उषा मेहता ये अरुणा असफ अली हस्बैंड नाम अरुणा रियल नाम क्विट इंडिया मूवमेंट एंड देन लक्ष्मी स्वामीनाथन नोन एज लक्ष्मी सहगल was revolutionary and member of the Indian National Army आजाद हिंद फौज सो ये थिला 2025 कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ये देखो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस प्योरली करंट अफेयर्स नॉले इंटरनेशनल रिलेशन तो हमर नहीं बट ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आसी dispute on oil gas resources in the Gulf of Thailand basically dispute over pre-wear temple surrounding the territory and the dispute of Mekong River water sharing and trade war. So correct answer is tomorrow B. यांकर historical dispute अच्छी एटा pre-wear temple and surrounding territory उपरे यांको उपरे अच्छी न्यूज रे थिला एटा सेहि में पक देछि the term seamless web with reference to interconnectedness of different part of Indian constitution was used by which of the following authors? Grenville Austin ये एते इजी नो बट जदि जानी थिबो जे स्टेट करिवो नले भूल भाल करिक आस्थिबो देन ग्रेनवाल ऑस्टिन द सेमिनल वर्क ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर्नरस्टोन ऑफ द नेशन एंड वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एज ए सीमलेस वेब कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो इन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड interdependence various part of the constitution the way fundamental right directive principle and power of the union and state work together maintain constitutional balance so ये बहुत बढ़िया कथा कहिथिले which of the following combination are correct with regard to social welfare policy and the year in which जोटे कि किए किए को वर्ष रे
या को मैच करै परिबो पोषण अभियान केबे हितला एबे साउंड क्लियर आछी ना कादम्बिनी सो क्वेश्चंस जहा अछि तुमर रॉन्ग ऑप्शन अछि दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन सो देखो कि कोन कहछि ए मैचिंग कोनटा होउची ओके राइट टू एजुकेशन 2009 हेई परिबो तुमर आयुष्मान भारत पीएम आवास योजना तो देखो मु वन बाय वन कैसो पोषण जोटे कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण 2021 रे लॉन्च हेतिला मिड डे मील वगैरह सो एटा ठीक अछि बट ए ऑप्शन ए धर देखियो देखि जो जना पड़ जो तुमको देन अंडर द सो एथर तुम मारी ग्रेस मार्क मिल जो राइट टू एजुकेशन एनेक्ट 2009 चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पई कराइतला देन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च इन 2018 प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवर 5 लाख फॉर फैमिली सो ये भी तुम्हारे 2018 तो ये अनुसार ठीक अच्छी एवं सिमिलरली प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च 2015 एफोर्डेबल हाउसिंग फॉर अर्बन रूरल पुअर सो ये से अनुसार देखंतु कष्टी कोन करिछि कोन करेक्ट करेक्ट कोनटा प्रथम कोनटा हवा कथा एटा correct with reference to social welfare policy and year in which it was introduced D हबो एक सेकंड क्वेश्चन ठीक है ताले सबुडा ठीक अछि तो सबुडा ठीक अछि तो कोन एठी क्रोनोलॉजी किछि पचारि ना एठी सबु ऑप्शन गुडा तो ठीक अछि ए बी सी डी सबुतिर अछि तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन गेटिंग or not एठी क्रोनोलॉजी पचारिनी सी पचारि कि या ऊपर कोनटा करेक्ट कॉम्बिनेशन अछि सबुडा करेक्ट अछि एवरीवन इज करेक्ट क्लियर or not तो तुम्हें जो ऑप्शन देथियो आंसर हबो तो एटा स्टार मार की छाडी देबो ये क्वेश्चंस एलिमिनेट हे जिवो सो विथ रेफरेंस चैलेंज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखि तो नहीं देखि अर्बनाइजेशन last two questions Okay, see here. With reference to challenges of urbanization in India, consider the following statements. Rapid urbanization often leads to strain on existing infrastructure such as housing, sanitation, water supply and transportation. तो देखते हुए जेहेतु रैपिड अर्बनाइजेशन जोगु जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर स्ट्रेन देखिया को मिलुची with respect to sanitation, housing, water supply. So this statement is correct. The growth of informal settlement like slums is a common consequence of unplanned urbanization due to unaffordable formal housing. अगर आपण जानिथिबे अर्बन एरियाज रे लैंड प्राइसेस बहुत हाई अछि किबा हाउसेस गुडाकर प्राइस बहुत हाई अछि सेति पई लोक माने कोन करंती रूरल एरिया रो माइग्रेट करिकि अर्बन एरिया को आसंती एंड दे एक्चुअली एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन informal settlements like slums. So the second statement is also correct. Urban areas typically experience higher rate of unemployment compared to rural areas, leading to increased pressure on social services. Urban areas typically experience higher rate of unemployment. This is wrong statement. Wrong statement. Actually जदि आपण data देखिबे rural unemployment is quite higher than urban unemployment. Okay. The unemployment rate in rural areas is higher than the unemployment rate in urban areas. But educated unemployment and underemployment is quite significant in urban areas, but not the overall rate of unemployment. The overall rate of unemployment is quite lesser in urban areas compared to in rural areas. But educated unemployment and underemployment is quite significant in urban areas. So third statement is wrong. Fourth statement, smart cities mission aims to promote sustainable and inclusive cities by applying smart solutions and leveraging technology. So fourth statement is also correct. So the correct options are 1, 2 and 4. So the correct option is 1, 2 and 4. Option is C. C is the correct option. So here is the explanation. 1, 2 and 4 only. This is the explanation. Please dekhi. Okay. So the last question is, who is the founder of Lingayat sect? डायरेक्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चंस देन या ऊपर हमें कट ऑफ ऊपर डिस्कशन करबा केही जीवेनी आपण माने समस्ते थिबे सब सार आसीबे ठीक अछि
सो कट ऑफ आमे डिस्कशन करिवु या परे आपण समस्त थिबे क्लास आउ अल्प समय पदरे सरी जीवो सो लास्ट जोंडा कि फाउंडर ऑफ लिंगायत सेक्ट जे कि बी इज द करेक्ट आंसर एटा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नुह बट फैक्चुअल क्वेश्चंस जे जानि थिबो करिवो जे जानि नथिबो बिल्कुल करिवोनी ता हाथ भी मारिवो नाही सो दिस इज बेसिकली Basava, known as Basavana, was 12th century philosopher, statesman, and social welfare in Karnataka. He is credited as the founder of the Lingayat Veera Shaiva sect. Northism, Shivaism, ये सब तांकर डायटी थांती सुप्रीम डायटी मोनोथिज्म एंड शिवाइज्म. सो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम या पर आमे कट ऊपर डिस्कशन करिवा. मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम द मोस्ट ट्रस्टेड मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम डेफिनेटली आपण आसंतु इंडिविजुअली मु बसीबी आपनकर एवरीडे बेसिस रे आपण कोन प्रॉब्लम अछि विल लुक इनटू दिस काइना मेंस राइटिंग आपण सिलेक्शन देबो प्रीलिम तो गुटे बेसिकली एलिमिनेशन राउंड मेंस जो माने प्रीलिम्स देइचंती समस्त प्रिपेयर करंतु काइना अल्टीमेटली आपण हो न हो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट. So this program will embolden your confidence. Okay, this program gives you confidence that you can clear next time prelims as well as mains. So try not to waste time. We are giving you 1 week gap, 1 week rest. Then we will start after 1 week. दिवाली जीव आम से स्टार्ट करूँ आपण मैंने पूरा रेडी हो जातु मेन्स मेंटरशिप प्रोग्राम अंडर द गाइडेंस ऑफ ललित सार शिव सार तुमर दीपक सार श्रीनिवास सार सबू सुजाता मैडम अर्पिता मैडम पूरा बंच ऑफ फैकल्टी अच्छा आम जड़े दिज फैकल्टी ऑर्गेनाइजेशन चलाऊनु स्पेशलाइजेशन अच्छी सबू आपण पाइबे एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम हियर. सो डू जॉइन एवरीथिंग आपण सबू प्रॉब्लम रो कौन कौन प्रॉब्लम होची ये प्रॉब्लम रो आमे सॉल्यूशन बाहर करिवु एवं सेल्फ डाउट अछि मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स अछि कौन कौन कोन टू स्टार्ट करिवा केमिति स्टार्ट करिवा इन्फॉर्मेशन मार्केट रे दौडुची क्वालिटी कंटेंट कोन टू पाइबु आमे एई सब आमे हेल्प करि परिबु आपनकू केमिति आपन लेखिबे कोन लेखिबे लाइव आमे आपनकू दबु लाइव क्लासेस माने लाइव आपन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पाइबु ये सब कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो एसे दिया जीवो राइटिंग प्रैक्टिस हो आउ जेमिति जेमिति जीएस रो भी हमर मेंटरशिप सेमिति ऑप्शनल मेंटरशिप प्रोग्राम सेइथिरे आपण चारिटा ऑप्शनल पाइबे गोटे हला आपनकर सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी बाय ललित सर सोशियोलॉजी बाय ललित सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय दीपक सर एवं ज्योग्राफी बाय शिव सर एंड होम साइंस बाय पुरुषोत्तम सर. तो ये सब चारिटा जाक आपण ऑप्शनल पाई परिबे एवं कॉम्प्रिहेंसिव वे रो गाइडेंस पाई परिबे टेस्ट सीरीज पाई परिबे इंडिविजुअल आपण को मेंटरशिप मिल जिवो एवं दैट टू वेरी लेस प्राइस रे आपण को जीएस पाई बहुत ही कम प्राइस रे पाइबे मात्र 5799 अछि एबे ताकू आमे कम करिकी डिस्काउंट देकी एबे 5499 अछि आपनकर जीएस रे आपण जॉइन करंतु एवं जेते मात्रा जॉइन करिवे फर्स्ट 30 पिलांक पई ये डिस्काउंट अछि तापर आगो को बढ़ी जिवो ये सब फैकल्टी अछंती आपण माने सैंपल पाई परि एमती वैल्यू एडिशन दिया जिवो आपण मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत पिला सक्सेसफुल पाई जंती देन कट ऑफ बर्तमान नेक्स्ट आसी जिवा सर आसी जानतु कि आमे कट ऑफ देखिबा केते कोन जाई परिबा. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पार्ट कट ऑफ केते हेई पारे जनरल जोंडे कि यूआर आपन करता परे एससीबीसी एससी एंड एसटी देन जनरल यूआर रे हमर मेल फीमेल. सो आपनकर सर कोन भाबुचंदी आपण आपण कोन लागुची कोन स्टिक एपुट आस प्ले सर 80 माने 70 टू 80 आउचन जेमिति लास्ट ईयर थिला जेमिति हां 75 जेहेतु हमर सर रीजन कोन कोन पई हमें प्रेडिक्ट करूचे कोन कोन तार लॉजिक अछि सर गोटे हला सर सीट कम अछि फैक्चुअल क्वेश्चन टी अधिका पचार देतिला हां
फैक्चुअल क्वेश्चन से पिला जो क्वेश्चन आसी जे आपण जानि नाथि माने करि परिबे हां हिस्ट्री क्वेश्चन टिके ओडिसा हिस्ट्री क्वेश्चन टिके ओडिशा हिस्ट्री क्वेश्चन थिला तो सेही अनुसार देखिबा कि क्वेश्चन स्टॉप अछि लास्ट कंपैरिजन रो तो कट ऑफ कम जीवो बट रीजन आमे टिके कट ऑफ सेही राउंड रो रखुछु पाखा पकी काहे कि ना हमरो सीट कम अछि सो सर मु एटा को प्रेडिक्ट करछि कि 70 टू 80 सेम भितरे आमे जीवो मेल रे अनरिजर्व मेल 70 टू 80 देन फीमेल अनरिजर्व रे आमे ट्राई करिवा 60 टू 70 ए रेंज रो 10 मार्क रो फरक सेमति रुहे 7-8 मार्क तो एनी हाउ रुहे सो एससीबीसी रो बेसी फरक नहीं 2-3 मार्क रो फरक रुहे तो आपण एटी कहि परियंती 67 रु तुमरो आपण 77 ए रेंज रहिबो ये आपनकर एठी रहि पारे 60 रु सही 67 ए भीतर आपनकर रहि पारे एससीबीसी वुमेन देन आउट रहला कोन सर एससी रे सर गला थरो जहा थिला तांकर 20 मार्क कम थिला कट ऑफ जनरल रु तो जदि एठी 70 रहबो ताले एठी हमर कहि परिबा 50 रु 60 भितरे 50 रु 60 भितरे रहि पारे आउ 10 मार एठी कमे देबा 40 रु 60 भितरे आउ एसटी रो 30 मार्क कम थिला 30 मार्क कम थिला 40 रु 50 ताले 40 रु 50 ताले 40 रु 50 भितरे आपनकर एसटी जीवो एवं फीमेल कैंडिडेट मानक पई सही 35 रु 45 भितरे जीवो एटा कहउछन बढ़े देबा उठके यूआर टिके अधिका जाई पारे काना सीट कम अछि आपन कहउछथि नंबर ऑफ सीट कम अछि सो इवन पॉलिटी क्वेश्चन भी टिके इजी अछि एनवायरनमेंट क्वेश्चन भी किछि इजी अछि तो सेही अनुसार आपन कहउछथि कि 70 टू 85 क्वेश्चंस अछि देन सर गोटे ब्रेकअप जामे करथिलु कि केउ सब्जेक्ट रु कतेरा क्वेश्चंस आसुची सेटा टिके सर आनिबे आमे टिके देखि दबा पिला को जानि जिवे कि कोउ सब्जेक्ट रु केतेरा क्वेश्चंस आसी देला आउ टिके आईडिया हे जिवो सो हमर सर हिस्ट्री पार्ट रा आपण देखंतु 20 टा क्वेश्चंस आसी हिस्ट्री रो 20 क्वेश्चन एथरा हाईएस्ट आसी हिस्ट्री क्वेश्चंस माने एते 15 टा पाक पाक आस्तला देन पॉलिटी रे सर पॉलिटी 22 क्वेश्चंस आसी एवं देखंतु 20 ए दीटा 42 क्वेश्चन ज्योग्राफी 12 टा पाक पाक क्वेश्चंस आसी एनवायरनमेंट आपनकर 13 क्वेश्चंस आसी इकोनॉमी आपन 13 क्वेश्चंस आसी और रिमेनिंग करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस तो चिंता करंतु जेतिक रिमेनिंग रहिला सही अनुसार आउ गोटे आम जब ब्रेकअप करवा किसी गोटे टेबुल करदे गोटे डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल जो देखा 3 प्रकार देखा गोटे डिफिकल्ट मॉडरेट इजी आपन डिफिकल्ट क्वेश्चन अराउंड सर 40 क्वेश्चंस हे जिवो 40 क्वेश्चंस डिफिकल्ट क्वेश्चंस पाइबे मॉडरेट लेवल आपन को 30 क्वेश्चंस अराउंड मॉडरेट पाइबे इजी क्वेश्चन अराउंड 30 क्वेश्चंस आपन पाइ जिवे तो जदि एई अनुसार देखिबा 30 क्वेश्चन इजी माने मानि नियंतु एठी 25 क्वेश्चन जणे करिला आउ 30 क्वेश्चंस रु एटा 50% आमे धरिबा 15 क्वेश्चन जदि करला ताले 25-15 हमर 80 हे गेला सो आमे सर 80 जो रेंज थिले आमे जो लॉजिकली कहउतिले सर 70 85 75 रु 85 एई रेंज रे हेई पारे काइना लॉजिकली भी प्रूफ हे जदी एई रेंज रो क्वेश्चंस आसी मॉडरेट पिला जे टिके भलो पडुथबो से क्वेश्चंस भी 50% करिवो ना ले लास्ट ईयर भी मार्कशीट बहुत पिला को देखि छी 90 प्लस आनी जंदी पिला माने जे माने इंटरव्यू देई जंदी मेंस देई जंदी 90 प्लस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 90 प्लस मार्क लास्ट ईयर पिला आनी जंदी लास्ट ईयर बढ़िया क्वेश्चन हां मु बहुत स्टूडेंट को देखि छी 90 प्लस आनी जंदी एग्जैक्टली 90 प्लस जदी पिला गला थोर आनी जंदी तो थोर काई आनी परिबेनी डेफिनेटली सो हमरो कट ऑफ तो ये गोटे रीजन बेस्ड हमें गोटे दोचू जे कि आपण कट ऑफ ए लास्ट एटा नॉट फिक्स एटा वेरी करि पारे प्लस माइनस 5 हेई पारे बट से 85 रु अधिक जीवाटा टिके डिफिकल्ट हां 85 रु तो अधिक केबे जीवनी या टू कम आसी पारे 75 भी आसी पारे आपण को 80 भी आसी पारे किबा 85 भी आसी पारे सो आपण यूआर पिलर 75 प्लस मार्क अछि तो यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन एवं आज टू प्रिपरेशन स्टार्ट करंतु माने आज टू माने रेस्ट करंतु किछि दिन देन तापरे प्रिपरेशन स्टार्ट करबे ना ओपीएससी रो बहुत क्वेश्चन कोन होय ओपीएससी नॉट किछि क्वेश्चन को सेटा प्रो राटा रे तमरो मार्क बढ़ी जीवो काइना कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर दिया ना
जो पिला माने आरथर भाबुतिले मोर 73 आसीबो तांकर आसीलो 78 तो एटा किछि नाही ए आंसर आमे देइछु मोस्ट वैलिड बट ओपीएससी ओपीएससी आपण माने जानि छिन समस्त सब से पांचटा क्वेश्चन को काटी देबो रेटेड कर दो तो सेही अनुसार आपण जदि भी इवन 70 पाखापति रहउचंदी स्टिल देन यू प्रिपेयर 70 प्लस अछि तो तमे प्रिपेयर करि पारो ताटू कम हेले टिके डिफिकल्ट होबाटा बट यू आर 70 प्लस अब जी 80 प्लस आनो छ बहुत बढ़िया से तो 100% करिवो ही करिवो बट 70 प्लस हेले भी चांसेस अछि काइना ओपीएससी कथा आपण जानि जंती प्रिपेयर करो प्रिपेयर काइना प्रिपरेशन करे आपण तो लॉस जीवनी हां नेक्स्ट ईयर तो दबार ही अछि जदि जे भाउ चाउ दम नहीं दैट इज अ डिफरेंट हां दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट आपण को दबार जदि अछि आपण जदि प्रिपरेशन सीरियसली करिया चाहौ जदि एनी हाउ देखंतु आपण को जदि मानि नियंतु प्रिपरेशन करले न होला आपण नेक्स्ट टाइम काम रे आसी जीवो आ प्रिपरेशन करले नी हेई गला आपण एथरो भी 12 बाजी गले हां सेटा बहुत असुविधा जो पिला माने प्रीलिम रिजल्ट पर स्टार्ट करन से माने केबे होंते नै ना केबे भी सिलेक्शन हो स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ टेक 1 वीक रेस्ट देन स्टार्ट डोंट थिंक अबाउट प्रीलिम्स रिजल्ट केबे आसीबो कोन कट ऑफ जीवो दैट्स इट डन एंड डस्टेड एग्जाम दे देचो बंद कर दियो देन स्टार्ट प्रिपरेशन घर द्वारा बुली बुला के आसो मस्ती मजा करिके आसो अगेन स्टार्ट प्रिपेयर ओके गाइस सो आउट एक कथा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम दीपक सर हमरो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जानिचंती आपण दीपक सर पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पोक से पब्लिक बहुत पिला पाइचंती एथरो टॉप 6 पिला जोंटा कि से पब्लिक 100 रु 6 जण 5टा पिला से पब्लिक एड रु सिलेक्ट हेचंती सो सेही अनुसार से गाइड करिवे सोशियोलॉजी मु गाइड करिवि स्पेशली आपण से बसी रहिबी गाइड करिवि एवं आपण जेमती सिलेक्ट हेबे जीएस रो भी आमे बसी रे पॉलिटी हेले दीपक सर आसिले गाइड करले पिलांको मु हिस्ट्री पार्ट सोशल इश्यू पार्ट सोशल जस्टिस पार्ट एथिक्स पार्ट रो गाइड कर देबी तो सब फैकल्टी हमर से अनुसार अछंती आपण डेफिनेटली बेनिफिट पाइबे आ आपण को गोटिए कथा कहबी आमे जहा कहू ताहा करू ताटू बेसी करू सो ट्राई करिवु जीवन दवा पई आपण माने पई आपण माने जेमती सिलेक्शन हेबे सेटा हमर लक्ष्य आ मेंस ही आपण को रिजल्ट दबो प्रीलिम से सब गला खत्म दैट्स इट थैंक यू गाइस गॉड ब्लेस यू जय जगन्नाथ नमस्कार।